And now, I would like to once again thank all of you for joining us today. It is an absolute pleasure welcoming all of you to today's evening. And now, to formally commence with the proceedings, allow me in welcoming elected member of the Southern Regional Committee and partner KPMG, Ms. Muniza Osman Bhatt, for the opening remarks. Let us have a round of applause for Ms. Muniza. Assalamu alaikum, everybody. It gives me great pleasure to welcome you all over here. As we all know that ESG is a very talked about topic, and now with the two standards that have come out, and a lot of focus is being paid to this area. And ICAP is very cognizant of this fact, and hence we had an ESG seminar earlier on. And this is a series of seminars that ICAP will be conducting because now we are going to focus on specific topics. Farooq has been very kind to guide us, and under his guidance, we are going to arrange these specific topics of ESG so that we can learn from industry experts as well as those from the profession. In today's session, we have, the industry leaders as well as leaders from the profession to talk about GHG, greenhouse gases, their emission, their calculation, and how they are going to affect the financial position as well as disclosures in the financial statements of companies. So let me, formally open the session, and I welcome you all once again. Thank you. Thank you, Ms. Muniza, for addressing the audience. And now it is time for our first keynote speaker. This speaker is joining us all the way from Islamabad via Zoom. Let us have a short introduction of who is joining us now. We have Mr. Aqif Saeed. He is currently the chairman of Securities Exchange Commission of Pakistan. Mr. Aqif Saeed joined SECP back in 2004 and has served as head of various divisions. Later, he was appointed as commissioner from December 2014 to 2017. He has extensive knowledge of regulatory, operational, and business of various infrastructure entities in the capital market. Even though he's joining all the way from Zoom, let us all applaud for Mr. Aqif Saeed. Thank you. Hopefully everybody can hear me. Yes, sir. We can hear you loud and clear. Thank you. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected Vice President ICAP, Mr. Aslan Khalid, Honorable Council Member Farooq Rahman, somebody who has always supported and spearheaded ESG related all matters. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. At the outset, I would like to commend the Institute of Chartered Accountants of Pakistan for its capacity building initiative in relation to adoption and implementation of international financial reporting standards, sustainability disclosure standards. In context of learning from COP28, particularly the need to phase out fossil fuels and tripling renewable energy capacity, it is the right time to collaborate and increase awareness about the impact of climate change and strengthen disclosure of attracting investment in sustainable based products and climate resilient infrastructure. I'm glad to share my perspective on greenhouse gas emission and the implementation of sustainability disclosure standards. As you are aware, we are grappling with the consequences of climate change manifested through extreme weather events, shifts in agriculture patterns, and depletion of natural resources. Pakistan, in particular, has experienced the most of devastating impacts of climate change in the form of catastrophic floods last year that affected around 33 million people with economic loss of approximately rupees 3.3 trillion. At the heart of this challenge lies our contribution to GHG emissions, greenhouse gas emissions. It is our collective responsibility to address this challenge head-on and transition towards sustainable practices. The industrial and energy sectors, among others, significantly contribute to our energy's greenhouse gas emissions by adopting cleaner technologies, promoting energy efficiency, and investing in renewable energy sources. We can reduce our carbon footprint and chart a course towards sustainable development. Equally crucial is the need for transparent reporting and data-driven decision-making. Comprehensive data on GHG emissions allow us
to understand the magnitude of the issue, set realistic reduction targets, and monitor our progress. This information not only empowers policymakers and regulators, but also serve as a tool for business to align their strategies with the environmentally sustainable practices. Therefore, I continue to reiterate at various forums that the government, private sector, and civil society must collaborate in crafting and implementing policies that prioritize sustainability. Through public awareness campaigns, capacity building sessions, as one arranged by ICAP today, the consistent engagement, we can foster a collective responsibility towards reducing greenhouse gas emissions. Corporate sector plays an important role in transiting towards sustainable economy. Globally, there is an ever-increasing focus on companies to operate in an environmentally and socially responsible manner and to have strong governance practices in place. From SECP's viewpoint, being both the corporate registrar and securities market regulator, one of our core objectives is to create a business environment that enables good corporate governance practices. And when we talk of corporate governance, it is incomplete without credible financial reporting and the key to ensuring transparency and accountability in business operations. SECP is keenly pursuing the ever-evolving ESG arena globally to ensure that the consistent and comparable information about the sustainability risk and opportunities is available to investors for informed decision-making. As many of you may be aware, that keeping in view best practices as well as local consideration, SECP had issued an ESG position paper back in late 2022 to start the conversation around ESG-based consideration. Our advocacy session that started in January 2023 in partnership with Multilateral was positively received by all stakeholders of capital market. This year was also transformative as International Sustainability Board introduced the IFRS Sustainability Disclosure Standard for harmonized reporting, while the Sustainability Standard 1, S1, focus on general disclosure of sustainability standards, while the S2 focus on climate-related disclosures and deep dives into climate-related indicators, including greenhouse gas emission, namely Scope 1, Scope 2, and Scope 3 emissions, and in case of lending organization, their financed emissions. It was considered imperative that all the relevant stakeholders in Pakistan, including regulators, capital market institutions, and companies, must explore the implication of these sustainable reporting standards. I'm glad that ICAP partnered with SECP for the first capacity building effort last year for capital market participant, as well as in-house capacity development of regulators and capital market institutions. We are very pleased to witness that our advocacy efforts and capacity building sessions paved the way for collaboration with key stakeholders of our regulated sector. The remarkable synergy created in a very short period of 1 year through collaboration and active feedback from stakeholders resulted in a cohesive ESG action plan being finalized. Simultaneously, we embarked on achieving some key developments that include partnership with ICAP on countrywide capacity building sessions, advocacy sessions, and entering into agreement for establishing an online dashboard called ESG Sustain. That will be a premier national level one-stop repository for all sustainability-related laws, regulation, capacity building, reports, and data covering our regulated sectors. Considering we lack a centralized platform for climate change-related information and sustainability-based products, this platform can be valuable for local as well as foreign investors. With regard to disclosure, we have also recently issued draft ESG disclosure guidelines with the purpose to encourage listed companies to enhance their ESG disclosure in a fair and transparent manner on voluntary basis.
The draft guidelines cover a wide range of topics under E, S, and G pillars, including the recommended metrics related to climate change, greenhouse gas emission, energy usage, gender diversity, executive compensation, non-discrimination, and health and safety, board diversity, incentivized pay and internal control, etc. I'm glad we have received valuable feedback that includes strengthening disclosure by adding metrics aligned with the sustainability standard. Accordingly, we are incorporating the suggested changes in the guideline that predominantly include: 1. Disclosure about approach used to measure and report gross greenhouse gas emission generated. Second, climate-related risks and opportunities. Third, capital deployed for managing the stated risk during the reporting period. Fourth, further disclosure as to manner and percentage of sustainability-related consideration affected into executive remuneration. We foresee that the guidelines will pave the way for preparedness of companies in adopting IFRS sustainability standards. Moreover, SECP aims to continue its efforts in increasing awareness, explore means for adopting and implementing IFRS sustainability disclosure standard. These standards provide a harmonized framework for transparent reporting, enhancing accountability, and contributing to a more sustainable and resilient global economy. As we embrace the challenge of reducing greenhouse gases emission, let us also recognize the potential for positive change. The implementation of sustainability disclosure standards is not merely a compliance requirement, but a strategic move to enable businesses to build trust, foster innovation, and contribute meaningfully to global efforts for a healthier planet in the longer run. With a strong market response across the region in recent years, it is expected that the ISSP standards may be mandated by several jurisdictions by 2025. Considering the global reporting developments and convergence towards IFRS, SECP is closely collaborating with ICAP as well as a stakeholder to assess ISSB requirements for local applicability before deciding on implementation for companies in phased manner. I believe that ICAP will build consensus with companies for the manner and extent for adoption of sustainability reporting standards. With the ESG regulatory landscape taking shape, companies should devote attention to rapidly accelerating their preparedness for sustainability-related financial reporting, including enhancing governance and data management practices. As local jurisdictions begin to adopt ISV standards, it is imperative from both a regulatory compliance and value creation perspective to integrate financial merits with non-financial disclosure across governance, risk management, and strategy. I will reiterate that through collaboration and consolidating our effort, we can foster an environment of accountability and enable stakeholders to make informed decisions, support sustainability initiatives actively, and attract investments. I will conclude by expressing my appreciation for ICAP in organizing this seminar. On behalf of the SECP, I want to reaffirm our dedication to collaboration with all stakeholders in shaping a sustainable, resilient future of Pakistan. Thank you. That was wonderful. Thank you very much, Mr. Akif Saeed, for joining us, giving your time, and sharing your knowledge with all of us. Once again, I thank you. And now it is time for our second keynote speech. We have a total of 4 today, and also someone joining us from Zoom, but this time all the way from the UK. Allow me in welcoming. Now, this person is Mr. Ravi Abhivardhana. He is a qualified chartered accountant with ICAP and is the Director of Strategic Affairs and Capacity Building at the IFRS Foundation. Let us please welcome Mr. Ravi Abhivardhana with a round of applause. Good afternoon, everyone. I come to you with a few slides, and please let me know whether you can see them. Yes, sir. It is visible to us, and your voice is also loud and clear.
Perfect. That's great. So thank you, first of all, to the Institute of Chartered Accountants Pakistan for this event and for inviting the International Sustainability Standards Board here today. Dear distinguished guests, the role of the accountancy profession and its collaboration with other stakeholders is really critical in the implementation of the ISSB standards. And via this collaboration, we believe it will support jurisdictions around the world unlock capital towards a more sustainable future, as detailed by the chairman of the SECP, Mr. Akif, a moment ago. I'm a chartered accountant like many of you here today, and I hope that by the end of my keynote, you will have a broad understanding of where to find materials to get started on understanding IFRS S1 and IFRS S2, supporting your efforts on your sustainability endeavours going forward. And with that, it's appropriate to really highlight what the ISSB is about, and it's focused on developing standards that can provide a common language for sustainability information to enable comparable and consistent sustainability disclosures across global capital markets. The ISSB works with jurisdictions around the world, including Pakistan, including Pakistan, to deliver this. And through this global shared endeavor, the ISSB standards can provide the foundations for globally applicable disclosure requirements, thereby establishing a consistent and comparable global baseline. This included working closely with the International Organization of Securities Commission, also referred to as IOSCO, who last year endorsed the ISSB standards following its thorough review. The ISSB's global baseline has been developed to provide information that is material to investors. And as articulated a moment ago by the previous keynote speaker, jurisdictions have started to move towards adopting these standards, such as Brazil, Japan, Singapore, and the UK, as well as other jurisdictions as well. And jurisdictions are then able to require local market participants to disclose further information by adding their own additional building blocks to these global foundations, as articulated by Mr. Akif a moment ago. The key milestones to date are very much detailed here, and it was a very busy year for us at the IFRS Foundation. The standards IFRS S1 and IFRS S2 were released on the 26th of June of last year. And shortly after that, that saw the Financial Stabilities Board announce work of the TCFD being completed, and that the ISSB would take over responsibility for monitoring progress on climate-related disclosures. Shortly after that, there was the endorsement by IOSCO following a comprehensive review of those standards. And that was shortly followed by the European Commission, EFRAG, and the ISSB confirming a high degree of alignment in climate-related disclosures. Over the next few slides, I'm very much going to talk you through the four-pillar strategy to support adoption and use of the ISSB standards. And all of these four pillars lead to an implementation, encompasses an implementation strategy for the standards. The first pillar is to do with where the ISSB sought to achieve a balance between the costs for companies in applying the requirements and ensuring that global investors, are provided with consistent, comparable, and verifiable information. Where possible, the ISSB has used terminology and concepts that should be familiar to report preparers,
in particular accountants who are familiar and use IFRS accounting standards. The ISSB has designed many requirements in IFRS S1 and IFRS S2 to be applied in a manner appropriate for a company's circumstances. That is, the requirements that are proportionate to the range of abilities and preparedness for companies around the world, including those in Pakistan. The standards also include guidance to help companies understand how to apply the standards and refers to sources of guidance to assist companies in reporting on those topics beyond climate. And later on in my keynote, I'll give you a quick run through on where to find those particular resources. And finally, the standards also allow for temporary or permanent relief for some requirements depending on a company's circumstances. Pillar 2 really goes to address the reliefs for first year application, and is focused on helping companies get ready for using both of these standards via first year application reliefs. And these reliefs are guidance provided by ISSB following careful consideration of information provided to them during the redeliberations of the standards. And I won't go through each and every one of these first year reliefs, but they are very much detailed here. For example, you can limit your disclosures to climate-related information in the first year, and after the second, and in the second year, companies should look to address the wider sustainability-related risks and opportunities. Pillar 3 is focused on the jurisdictional journey. And now that the standards are in the public domain, this pillar is focused on the jurisdictional journey towards adoption, bearing in mind the various different jurisdictional circumstances that are applicable. The IFRS Foundation is committed to supporting regulators around the world in adopting the standards in a timely and consistent manner, bearing in mind the ask from IOSCO. Later this year, the IFRS Foundation will complete its adoption guide to support jurisdictions in their adoption of IFRS S1 and IFRS S2. We have already published a high-level roadmap as a precursor to this document, which provides information on how the IFRS Foundation and the ISSB are approaching adoption considerations. The purpose of the adoption guide is to facilitate consistent adoption approaches while supporting jurisdictions in transitioning to full application of IFRS S1 and IFRS S2. We are balancing jurisdictional consideration about phasing in of requirements with the need to achieve global consistency and comparability from a global capital markets perspective. And the adoption guide will set expectations on the scope of application of the requirements and the pace of introduction of those requirements. It is great to see the strong interest already, just a few months post-publication, from jurisdictions that have already indicated their interest in moving towards adoption. Jurisdictions that have sought and are currently seeking have announced their have provided feedback on their draft sustainability reporting requirements, and those include not only Pakistan but also other jurisdictions such as Australia, Hong Kong, Singapore, UK, Japan. And jurisdictions that have publicly announced their intention to adopt the ISSB standards early include Brazil, Nigeria, and Kenya. And the final pillar is to do with capacity building to support the market in getting started on the use of IFRS S1 and IFRS S2 standards. And last year, the partnership framework set out
the capacity building initiative for the IFRS Foundation, which helps to consider specific circumstances of emerging and developing economies, including smaller companies, when it comes to ISSB standards. And its focus is on enabling consistent and comparable high-quality disclosures to bring benefits of sustainability-related disclosures to all. One thing which we had released late last year at COP28 was the IFRS Foundation Knowledge Hub, which includes freely available resources with significant resources provided by the accountancy profession, including those of the Institute of Chartered Accountants Pakistan, raising the importance of the professional accountant in playing its role and driving forward such matters in a collaborative manner. And if technology allows me to show you the IFRS Knowledge Hub, I'm now going to share my screen to show you what this looks like. So if you follow the hyperlink IFRS Foundation or ifrs.org/knowledge hub, you'll be brought to this landing page, and it's a landing page for preparers in supporting them on IFRS sustainability disclosure standards. And here it includes a quick start guide on how to actually use the hub, an introduction to the IFRS Foundation if you're new to this, but also the resources that have been made available from many organizations around the world, including the Institute of Chartered Accountants Pakistan, but it also includes IFRS Foundation educational resources, frequently asked questions, webinars and podcasts, and archive materials from the consolidated entities. In addition to that, it also includes courses too, and I'll get onto the courses in a moment. For those who are not necessarily aware of what IFRS S1 and IFRS S2 is about, there are some high-level introductory videos to support your understanding of these materials, and also an overview of what the standards are about, covering off areas such as material information, but also the importance of connected information with the financial statements too. If I take you to the toggle of IFRS Foundation materials, it takes you through what resources are freely available for use by you, including many resources around the materiality approach to the IFRS sustainability disclosure standards, but also the nexus between climate and nature. And some of these resources could be helpful with regards to the discussions which you may be having internally within your organizations when it comes to ISSB, such as an introduction to the ISSB standards. There's also a section around frequently asked questions, which may be helpful to address any questions which you may be getting from stakeholders. But also the Knowledge Hub includes courses. And these courses are detailed here. So we're currently developing an e-learning mechanism to the IFRS sustainability disclosure standards, designed to respond to market demand for getting started on implementing IFRS S1 and S2. And there's also a UN Sustainable Stock Exchange initiative, which is a collaboration between the IFRS Foundation and that organization. And there's also another qualification for the more advanced individual around the fundamentals of sustainability accounting, which has been updated to reflect the ISSB standards.
So hopefully that has been a very helpful insight into the ISSB standards and the importance of capacity building and the importance of capacity building for the foundation and what we're doing to support the market on its journey to implementing these particular requirements. And if you do have any further questions, I'm happy to take them in due course. But with that, I'll hand back to the Master Ceremonies back in Pakistan. And yes, allow me in welcoming all of you back after the prayer break. And now let us move forward with our third speaker for today. And again, someone who is joining us from far, far away, this time not so far, but from Saudi Arabia. Allow me in welcoming a passionate, creative, and driven finance sustainability professional with over 10 years of experience. She firmly believes that current business environment highlights the necessity of business, new ventures to learn and grow. And currently, she is serving as Director, Sustainability Consulting at CROI, Pakistan. Please welcome Ms. Fawzia Safdar Khan with a huge round of applause. So I will try to stand a bit higher. I'm visible, right? And audible. Assalamu alaikum and welcome for such an exciting session, something new to learn, right? IFRS, we are learning for 5 years during our articles with exams and again, new standards. Oh my God, what to do? So yes, we are accountants. We can do anything. We just have to learn, keep updated and start our surgery with the financial statements. So here I have this figure. Can I just get which one? Sorry, new to this. Yeah. So everybody is talking about IFRS 1 S2 and the most difficult thing the new thing which we have seen, GHG emissions. And then when you're talking emissions, that what we have to do with that. As an accountant, we have to make inventory of that emissions. And then after doing the inventory, we have to calculate, we have to give some kind of figure, some kind of financial amount to that. And then later we have to bring that into reporting. Anybody having disagreement with this thing can raise the hand. So everybody agree with me, right? So, yes, sir? Yeah. Nothing new. Everything is built up what we already have in sustainability era. GRI, TCFD, SASB, CDP, a lot more. But the thing is that IFRS has made things easier. IFRS has translated all these disclosures, all these reporting requirements in our language. So I met CEO of ICAP at COP28, and he said, Fawzia, how did you find the language of IFRS S1 and S2? So I just responded that being a chartered accountant, I think it's a poetry for me. So the standard language is literally a poetry for all of us. There's nothing so much worried about that. So if we look at the slide, it is based on TCFD and who are the major users of financial statements? Anybody can tell me? Investors, shareholders. So we have made it broader by making stakeholders. So everybody who has the interest in the business will ask for you to bring your financial statement, but incorporate sustainability lens in that. IFRS 2, so you already have a session covering IFRS 1 and now S2. S2 you cannot do all alone. It is actually a topic. ESG, I want to raise the hand. Everybody is familiar with ESG? So environment, social governance. Thank you, sir. You are very much familiar, by the way. So climate is one topic of E. I will not say this is total environment. It's one topic of E. Environment has waste, environment has water, environment has pollution, our environment has climate. So one topic.
So IFRS is planning to have more standards on the topics, but the first topic they covered is climate. So we cannot do it all alone. We have to study it, or we have to connect with IFRS 1, because S1 is a global standard. It will cover everything: sustainability, risks, and opportunities. Familiar with this term, risks and opportunities? No. So risks and opportunities. Forget about sustainability, risks and opportunities. So think about risks and opportunities. Anything which is riskier for the business and the business having the opportunities, we will just keep that thing in mind. And we will just bring the lens of sustainability to that. So IFRS 2, you have to use in accordance with S1. And it's, again, material information. We are not required to disclose everything. So don't worry about that. We have to do our risk assessment. What is material to us? What is material to the business? Only that thing we have to disclose. And definitely, it's just like expenses and revenues is the risks and opportunities, right? So in our language, it's what is expense for us and what is the revenue or income for us. So what are the opportunities sustainability is bringing to me? Just like solar panel, solar energy, solar panel, renewable energy, or if I look at food, organic food, using less fertilizer. So lots of business opportunities are there. We can have better product. We can jump into new market. We can attract actually the new generation, right? So S2 has given you a lot of details, but we have to read it with S1. I will give you a small snapshot of that. So what is the objective? The objective is that we have to disclose. So being chartered accountants, we know that we have to bring everything in the reporting, right? We have to bring the disclosures there. So what we have to disclose? Very much clear, risks and opportunities, but those risks which sustainability is bringing. So when we are talking about the topic, which is climate, so every risk which climate is bringing to the business. Can anybody tell me one risk, climate risk to the business? Any. Floods, that's a natural risk, right? Climate and rain, flood, drought, these are all natural, right? Anything else which is like asking you to change? It's getting too much hot now in UK, right? And they are looking for to install air condition there. They don't have the air condition system there. So it means that there is requirement of a new business to install the air condition system there. So it is bringing the opportunity also, yeah? So change of product, right? Change of market, change of taste. Kids really now want to eat organic rather than, the natural thing. They want to go for fertilizer free. So taste and our wishes, our thoughts are changing with the time, with the era. So it's bringing risk and opportunity both. Okay. So as one of you told, that physical risk, transition risk, and opportunities. So physical risk, we all know this is related to weather, climate, floods, rains, droughts, heat, waves, and sea level getting higher. And then transition risk is related to change in taste, change in product, regulatory requirements that, okay, there is a ban on this product. Nobody is going to use mix fabric. Everybody has to go for organic cotton fabric. So it's a change in market. As I mentioned before, you cannot apply S2 standalone. You have to read it in collaboration, in accordance with S1. But it should be here, right? But it's here. So S1, a small snapshot. We are very much familiar with these words. Strategy,
governance, risk management. यहाँ तक ठीक होना चाहिए हमारा. Anybody जिसको confusion है, strategy क्या है, risk क्या है, governance क्या है, just raise the hand. Can you just say loud what's the problem with strategy, risk management, and governance? One liner. So just now, one guy has told that the risk is there, that when the climate is changing, then tell me, when there were floods last year, a lot of supply chain disturbed, right? And the buyer, they lost the trust on Pakistani suppliers, or Pakistani supplier has to arrange the product from somewhere to deliver, to keep its reputation intact. So this is one of the risks, huh? Right? And then strategy, that how you are planning to incorporate that risk and adjust that risk. Without governance, ICAP is not going to organize this session. So we need governance, processes, controls to implement anything, right? And the new thing is metric and targets, right? If ICAP want to become a net zero institute, they make a metric that we have to shift 100% to renewable energy, right? Everything from solar panel or wind or hydel energy, right? Electricity, nothing from NEPRA. So this is metric, measuring what the measurement is. And the target is that Farooq Saab said कि अगले 10 साल में हम 10% करके अपने आप को renewable energy पे लेके जाएंगे. So you decided a metric, measuring your thing, and you plan the target, right? So I have to jump quickly to GHG protocol, GHG emissions. So the आपके जो major content है IFRS 2 का, those are 4 pillars जो हमने अभी discuss किया है: governance, risk management, strategy, metric and targets. And I hope कि हमें बड़ी अच्छी example मिल गई metric and targets की. So we are measuring and then we are targeting it, right? Just like जैसे हम financial statements और budgets बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें हम financial modeling करते हैं कि इस scenario में, like अगर economic conditions, political conditions, regulations ये होंगी तो हमारा revenue इस level का आएगा, and this is our budget and financials. Just like that, this is the thing, right? Nothing new, building blocks. And this is just for you guys to read quickly because I don't want to read the slide. So my main concern is just 2 minutes to read because everybody's reading. So we have physical risk related to weather and climate. We have transition risk, which is related to reputation, legal requirements, change in taste, change in product, and so on. और कुछ examples आपके लिए मैंने यहाँ पे लेकर आई हूँ, so you can see कि अच्छा हो क्या सकता है. And अगर हम इसको देखें कि we are making this product, which is not organic cotton, and there is no more demand of this product, right? Now मुझे इसको organic cotton पे लेकर जाना है, और organic cotton की emissions कम है, so मुझे lower emission product पे लेके जाना है. So it is a cost. I have to change the machinery, I have to change the raw material, I have to change the processes. So definitely ये सारी चीजें मुझे financial impact लाएंगी मेरे ऊपर, cash flows में, access to finance, and definitely cost of capital in long, medium, and short terms, right? Any disagreement here till that? Good. तो opportunities देख लेते हैं हम. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, low emission goods and services, new marketing. हमारे जितने भी competitors हैं ना, India, Bangladesh, Vietnam, they are working so fast to bring the products, और अब वो अपने products की जो bar coding कर रहे हैं उसमें वो emissions दिखा रहे हैं कि हमारी emissions जो है, my product is a low emission product, it's safe, and it's actually saving the
planet, everybody is going towards this side. So अब ऐसा करते हैं, being chartered accountants, थोड़े financials देखते हैं. So no need to write this all, look at this all. मैंने आपके लिए underline कर दिया है. एक कंपनी है जिसने स्ट्रैटेजी की है, मैंने डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी करनी है. सर जरा जल्दी से डीकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी बताएं क्या है. लाउड सर मिस्टर KPMG. I'm sorry, I don't know. Yeah. We have to ultimately achieve carbon neutrality or net zero, but it's a gradual journey. The whole journey is known as decarbonization, where we have to invest in certain activities where we can curb the emissions and not only carbon dioxide, but other Yeah. So- greenhouse gases as well. So the word itself explains the whole story. Decarbonization. हमने carbonization को माइनस करना है. So this is the strategy. जो हम अभी 4 pillars की बात कर रहे हैं, strategy, risk management, governance, metric targets. अगर आप देखें तो financial statements में, reporting में, accounts में उन्होंने आपको strategy भी बता दी है. ठीक है कि हमने अपने प्रोडक्ट को emission free बनाना है या कम emissions पे लेके जाना है. उनका टारगेट है कि उन्होंने रिड्यूस करनी है कार्बन emissions by 25%, by 35% by 2030, right? So in this way, if we already know कि हमारी emissions है कितनी, like आज हमें ICAP का अगर पता चल जाता है कि electricity जो यूज होती है ICAP की बिल्डिंग में, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल्स यूज हो रहे हैं वो कितने गैसेस निकाल रहे हैं, तो आई थिंक फारूक साहब इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी इतनी एमिशंस हम कम कर सकते हैं, राइट? सो मेजरमेंट जरूरी है, वो वैल्यू, वो फिगर जरूरी है टू डिसाइड. आई लव दैट स्टेटमेंट. What we want to manage, we have to measure, and if we can't measure, we can't manage, right? So this is the example. Just 2 seconds, read that orange part. अच्छा, जहां बोरिंग हो जाएगा, tell me, I will crack a joke. So now the major topic. Greenhouse gas emissions. IFRS S2, that is climate related disclosures. And climate is environment, और environment में हम क्या भेज रहे हैं? जी, क्या भेज रहे हैं? Business क्या भेज रहा है? नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, और भी बड़ा कुछ है. हम ग्रीन हाउस गैस emissions भेज रहे हैं. So आज के बाद हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, हम ग्रीन हाउस गैस emissions कहेंगे. तो ये सिर्फ एक गैस नहीं है, और भी गैसेस हैं, काफी siblings हैं, siblings of 6 or 7, right sir? Yeah, 7 siblings हैं, 6 siblings हैं. हाँ, it's a big family. So yeah, okay. अब disclose क्या करना है हमें? हमने रिपोर्टिंग करनी है, डिस्क्लोज क्या करना है वो देखते हैं. हमें फॉरगेट अबाउट स्कोप 1 to 3, देखते हैं वो क्या है, वी विल सी कि क्या है. हमें डिस्क्लोज क्या करना है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स एवरीबडी नो, राइट? एनीबडी? नो. सो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरीज, कॉम्प्लेक्स बिजनेस. अगर तो सिर्फ एक बिजनेस है तो जिंदगी आसान है, बट अगर एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर है तो हमें डिसाइड करना है कि हमने कितने रेवेन्यूज कंसोलिडेशन में डालने, कितने एक्सपेंसेस डालने. मेरा ख्याल है ये तो बड़े ही फेमिलियर वर्ड्स हैं हमारे, राइट? सो आई लव योर स्माइल मनीषा, राइट? So what we have to do, we have to look into that group. कि business का structure क्या है? Is it a simple structure or is it a complex structure? So we will, being the chartered accountant, we will look at कि उसमें joint ventures कितने, subsidiaries कितने, associates कितने हैं, तो ये हमें सबसे पहले देखना है. और आपको S2 कह रहा है कि इन सब की रिपोर्टिंग, इसकी कैलकुलेशन अलग-अलग करो और फिर इसको कंसोलिडेट कर दो. ठीक है? सो बड़ी सिंपल सी बात है, अभी तक तो चीजें आसान है, राइट? और फिर एक ओके, बिजनेस
right? जो बिजनेस अपने प्रोसेसेस में कर रहा है, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करो, और इस बिजनेस की वजह से जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में चीजें हो रही हैं उसको भी रिपोर्ट करो। जैसे ये डाइस बना, राइट? दरख्त कटा, दरख्त से प्लम्प आया, वहां से इसकी प्रोसेसिंग हुई, वहां से फर्नीचर बना, फर्नीचर की पॉलिशिंग हुई, फर्नीचर को पैकिंग किया गया, उसका फिर फ्रेट आया, फ्रेट से ICAP तक पहुंचा, और अब ICAP इसको यूटिलाइज कर रहा है, राइट? इज अ वैल्यू चेन। सो S2 कह रहा है कि प्लीज अपनी तो तुम लोग करोगे GHG एमिशन कैलकुलेशन, वैल्यू चेन को भी इंपॉर्टेंस दे दो, राइट? नथिंग टू वरी येट, राइट? तो अब हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। S2 ने ये जो सारी एमिशंस हैं पूरी वैल्यू चेन की, बिजनेस इटसेल्फ, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, इसको 3 कैटेगरीज में कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि स्कोप 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। यू विल गेट ऑल द, अभी जो एलियन वर्ड्स लग रहे हैं ना, द टाइम यू गाइज विल लीव दिस ऑडिटोरियम यू ऑलरेडी नो दैट, आई प्रॉमिस, इंशाल्लाह। सो ये वर्डिंग एज इट इज है कि आपका डिस्क्लोजर, आपका स्टैंडर्ड के कह रहा है कि 3 जो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अदर इनकम्स, लाइक दैट, आपको अपने एमिशंस को भी कैटेगराइज करना है इन स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। एंड आई थिंक आई डोंट वांट दैट यू लुक फर्दर। आसान आसान बातें करेंगे हम। सो S2 ने कहा कि चूंकि इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो चुका है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इनिशिएटिव्स 1998 में लॉन्च हुए थे, तो जितने भी लोग यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के साथ काम करते हैं, दे ऑलरेडी नो कि ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का भी एक स्टैंडर्ड और एक बॉडी है। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो इट्स नथिंग न्यू। उन स्टैंडर्ड्स को हम थोड़ा सा समझेंगे, वरना हम ICAP को कहेंगे कि रेगुलर सेशंस कराओ, हमें सिखाओ, CPDs करो, और फिर हम लोग ऑलरेडी हमें पता होगा ये सब कुछ क्या है, राइट? सो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने लीड किया हुआ है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद करने की जरूरत नहीं है, जरा मैंने कहा मेकअप स्लाइड्स भी होनी चाहिए थोड़ी, लगे ना कि यू नो वेरी इंटेलेक्चुअल स्लाइड्स। सो दीज आर द सिबलिंग्स। आप बताइए सर, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है या और गैसेस भी हैं? या बट हमें किसी गैस का नाम याद नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक if we are reporting our consolidated accounts in rupees, we are just concerned about rupees. If we are consolidation in pounds, we are concerned about that. So जैसे वो एक measuring unit है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक measuring unit है अपने बाकी siblings के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड की relative बाकी जो gases हैं वो environment को कितना harm कर रही है। Like अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक यूनिट है तो मीथेन उससे कितना ज्यादा हार्म करती है, CH4, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कितना करती है। तो जस्ट अ रिलेटिव मेजरमेंट, नहीं याद करना हमने इनके नाम, नो नो, आई डोंट वांट। देख लीजिए ताकि जब सामने आए तो पता हो, राइट? ये तो मैं चाहूंगी कि हमें मुनीजा बता दे। मुनीजा, ये IFRS से आया है सारा कुछ, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स। बड़ा मसला होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी कंप्लीट, सेम। सो दिस इज समथिंग नॉट न्यू फॉर अस। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल भी कहता है कि जब आप GHG इन्वेंट्री, ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री करो, तो इन प्रिंसिपल्स को प्लीज रख लो कि जो आपसे रेलिवेंट इन्वेंट्री है वो उसमें इनकॉर्पोरेट करो, मिस्टेक्स ना हो, कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, राइट? अगर आप कोई डेटा नहीं डाल पा रहे, उसको डिस्क्लोज करो कि नहीं डाल पा रहे। नो नीड टू हाइड एनीथिंग, राइट? आई थिंक वी ऑल आर फेमिलियर विद दीज प्रिंसिपल्स। प्लीज रेज हैंड्स। ओके, वैल्यू चेन, राइट? मेन बिजनेस, मेरी सब्सिडरीज, मेरे जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, मेरी इन्वेस्टमेंट्स। अब
मैं क्लाइंट पे चली गई और अब मुझे इन्वेंट्री स्टार्ट करनी है, क्या करूं? मैं एक बाउंड्री बनाती हूँ कि इस बाउंड्री में जो जो ग्रीन हाउस गैस इस्तेमाल हो रही होगी, फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, मैं उसको इन्वेंट्री में ले आऊंगी। तो आई एम जस्ट स्केचिंग अ बाउंड्री कि मेरे बिजनेस की बाउंड्री क्या है, ताकि मैं उस बाउंड्री के अंदर रहकर अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री कैलकुलेशन करूं। आई थिंक मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, इमेजिनरी लाइन, बाउंड्री एंड एवरीथिंग, राइट? सो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री बना ली, और एक और बाउंड्री है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो चले गए, अब इसमें से कौन कौन सा सोर्स है फ्यूल का। अगर मैं इस समझे ये हमारा बिजनेस है, राइट? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? एनीबडी विल गेट अ डाइट पेप्सी फ्रॉम माय साइड। हीटर, एयरकॉन, राइट? क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये नेचुरल गैस, इसको ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आई हुई है। सो फर्स्ट इज मैपिंग द बाउंड्री कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर क्या क्या लाना है, और फिर उसके अंदर जाके भी मुझे सोर्सेज ढूंढने हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं, राइट? इस वक्त ये एमिशन मेरे अपने नहीं हो रही, लेकिन इसको बनाने में वो जो फ्यूल जल रहा है ना ग्रिड के अंदर, या जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बन रही, वहां पे फ्यूल हो रहा है, एंड आई एम द सोर्स, क्योंकि मुझे बिजली चाहिए, मैं रीजन हूँ। लाइक ICAP इज द रीजन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, राइट? सो अगर हम देखें तो हमने एक बाउंड्री सेट की कि कौन कौन सी चीज आएगी, और उस बाउंड्री के अंदर जाके उन फैसिलिटीज में जाके हमने सोर्सेज चेक किए। 1 minute to read this slide, less than a minute, क्योंकि इसके बाद ना हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन है जिससे सवाल किया जाएगा, सही जवाब मिलना चाहिए, अदरवाइज वो FCA से AC हो जाएगा। अगर कुछ इसमें ऐसी कोई नई बात आई है तो मुझे जरूर बताएं, जो अभी हमने यहाँ डिस्कस नहीं की। मैम प्लीज। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री डिसाइड करनी है, और उसमें भी हमने ये देखना है कि क्या चीज हम लोगों ने अडॉप्ट करनी है, क्या नहीं। हमने ऑर्गेनाइजेशन सेट कर ली। मैंने सोचा कि ठीक है, ICAP कह रहा है कि मैं कराची का ऑफिस, लाहौर का ऑफिस, इस्लामाबाद का ऑफिस, मुल्तान में उसने बिल्डिंग शेयरिंग पे ली हुई है, तो हाफ ऑफिस, ठीक है। एंड लाइक दैट ICAP ने डिसाइड किया कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री है, और उसमें मैंने सोर्सेज भी डिसाइड कर लिए कि फ्यूल्स कहाँ का। जनरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने अभी ICAP में जनरेटर्स का नाम नहीं लिया। जनरेटर्स चलते हैं, राइट? उसमें फ्यूल आता है। अब करना क्या है, कंसोलिडेशन करनी कैसी है, किस परसेंटेज से लूं, उस पर भी कुछ गाइडेंस चाहिए है। दो अप्रोचेस दिए हैं ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल में। या तो ये कर लो कि आपकी उस सब्सिडरी, आपके उस जॉइंट वेंचर में आपका इक्विटी शेयर कितना है, ओनरशिप कितनी है, उतनी परसेंट की एमिशंस अपनी इन्वेंट्री में ले आओ। लाइक ये शेयरिंग बिल्डिंग है, 50% ICMA का है, 50% ICAP का है, तो मैं 50% ही अपने में लूंगी, क्योंकि मेरी ओनरशिप 50% है, राइट? और दूसरा है कंट्रोल्स। अब हम अगर बड़े बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहां पर हमारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे किसी में फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं, किसी में हम सिर्फ ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेस्ड ऑन के हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स कितने हैं और ऑपरेशनल कंट्रोल्स कितने हैं, वी हैव टू डिसाइड। दीज आर द अप्रोचेस जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेंट्री डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी इन्वेंट्री अपने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में लानी है। एक छोटी सी एग्जांपल करें मैडम? इट्स नॉट कंप्लीट। खैर, मैं एज्यूम कर रही हूं हमारा ये बिजनेस है,
आवाज क्लियर है मेरी? ओके, सो ये बिजनेस है हमारा, ठीक है, और हमारी 3 फैसिलिटीज है। आई एम अज्यूमिंग कि हर फैसिलिटी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, क्योंकि हमारा मेजरिंग यूनिट क्या है? हमारा मेजरिंग यूनिट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, जस्ट लाइक रुपीज एंड पाउंड्स एंड स्टफ, राइट? तो हर फैसिलिटी जो है उसके 100 टन्स एमिशंस है, राइट? तो जब हमने इक्विटी की बेस पे किया तो मैंने देखा कि मैं 0% शेयर है मेरा फैसिलिटी ए में, देन 75% इन बी एंड देन 100% इन सी। आई थिंक कैलकुलेशन में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो वी कैन सी कि हमने 0 एमिशंस लिए जहां पे हमारा 0% इक्विटी शेयर है। उसके बाद हमने 75% शेयर लिया जहां पे हम 75 है, एंड ऑल टुगेदर जो हमने रिपोर्ट किया दैट वाज अकॉर्डिंग टू equity share. Any disagreement till yet? फैसिलिटी ए ओएलएन आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओएलएन है, आपकी इक्विटी नहीं आकर ऑपरेटर ठीक ठाक एमिशन है, हाउ कैन यू नॉट इग्नोर दोस थिंग्स? सर आपने ना कंसोलिडेशन में डिसाइड किया कि मैंने इक्विटी बेस पे जाना है, ठीक है? जब हम लाइक इक्विटी बेस है तो 0 है तो 0 है। यू हैव टू डिसाइड, दिस इज योर प्रिजम्पशन, राइट, व्हिच यू हैव टू स्टेट इन योर अकाउंट्स। जैसे आप लोग कंसोलिडेशन में आप assumptions लेते हैं कि आपने कंसोलिडेशन किन बेसिस पे करनी है, सो यू कैन नॉट लाइक गो आउट ऑफ दैट, राइट? सो नाउ फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब फाइनेंशियल कंट्रोल्स में जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक बेनिफिट है, जहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, दे आर नॉट ऑपरेटिंग, इक्विटी शेयर नहीं है, राइट, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट है, तो देयर यू हैव टू सी। जल्दी से इसको देखते हैं और जिसको समझ आए वो फौरन हाथ रेस करे। आई वांट टू सी किसका कितना लाइक एब्जॉर्ब। वाओ, इजी है ना, समझाने की जरूरत नहीं है। डन डन, मिस उस्मानी, डन? And now the third approach which sir was asking, so this you have to decide कि आपके controls कितने हैं, आपकी financial influence कितना है और equity share। ये 3 approaches है आपके पास। You don't need to go beyond that. We will just follow what standard is saying. मैं practically बताऊं तो जहां पे like majority we are using control approach, right? Yeah, because operational, this is just like IFRS में क्या है, substance over legal forms, so right, so when you are talking about that, तो जो majority globally जो approach use की जा रही है वो आपकी operational control है। So I'm giving you the inside information. और ये एक summary है। I really want कि आप इसको देखें और please come up with the question. थोड़ी देर तक मैंने सवाल करना है समरी में से, तो इसको ना अपने पेस्ट कर ले अपने इमेज में प्लीज। ओके, नाउ द ऑपरेशनल बाउंड्री। सो हमने ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री तो देख ली कि ठीक है, हमने जॉइंट वेंचर 3 अप्रोचेस हैं और उसमें भी द टॉप मैनेजमेंट डिसीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसीजन। मेरा नहीं ख्याल सर कि हम मैनेजमेंट के डिसीजन के बियॉन्ड जाते हैं, राइट? Even in sustainability reporting, we can only we can give advice, but if the top management decide that मुझे equity share में जाना है, you have to do because it's acceptable, and that is part of your S2. They are saying that just follow GHG protocol and go for it. So operational boundary. अभी मैं बात कर रही थी scope 1, scope 2, scope 3. इसमें हम सिर्फ एक चीज करेंगे, direct expenses, indirect expenses. I really want to know from, I didn't move this one. Okay. We have another mic.
Bring this girl in green hijab. Seniors ऐसे ही करते हैं. Yeah. What do you think that what is the difference of direct expense and indirect expense? Direct expenses are which are the direct part of the businesses, and indirect expenses which are not part of the direct businesses, which are the part of business which indirectly. So which are the indirect costs. So अगर मैं इसको थोड़ा सा refine करूँ, very well done, mashallah. So direct will be something which is directly involved in the processes and the Operations of production the- of the product and the services. Yes. And indirect expenses are which is helping you to do that, Exactly. right? That is supporting the Yeah. business. तो अगर आज से हम कहें कि scope 1 direct expense है, you guys are fine with that? Yes. ठीक है? और scope 2 and scope 3 indirect expense है? कर लें, आज से agree करें? So आज के बाद हमें कोई भी पूछेगा scope 1 और scope 2 and scope 3 क्या है, तो सर आप क्या कहेंगे? मैम, जल्दी से मुझे फारूक साहब ने 1 घंटा दिया हुआ है बस. Scope 1 is direct and the rest are indirect. तो scope 1 क्या हो सकता है आपके ख्याल में? Basically, scope 1 is the direct expenses that occur during the, which are basically the directly, apologies, associated with the company's operations. Okay, चलें कपड़ा बनाते हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल आया, थ्रेड आया Exactly. और वो वीविंग में चला गया. Yep. ठीक है? क्या ख्याल है इसमें स्कोप 1 कहाँ पे है? Basically, जो अच्छा मैं एक चीज बता दूं. Fuels. When you are talking about greenhouse gas emissions, keep it in mind fuels. Am I right, sir? Nothing other than fuels. Fuels ही emissions दे रहे हैं. Yeah. जी. Fuels. कपड़ा, weaving, fuels. Tell me. natural gas जो basically होती है, अगर वो कहीं use हो रही है तो वो that would be scope 1. Coal, if that's used somewhere, वो भी होगा. Refrigerants in any case, वो भी scope 1 में include हो जाएंगे. The electricity that you're using, that would be scope 2. क्या ख्याल है वो जो thread आया है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक ले जाने के लिए जो एक कैरियर यूज हुआ है, Yep. उसमें जो फ्यूल Fuel यूज हुआ है, petrol or diesel, so that would also be scope 1. so scope 1, very simple definition. हमने तो फारूक साहब हमें तो आ गया, पूरी इन्वेंटरी आ गई है. So क्या प्रोसेस क्या है? सबसे पहले emissions associated with the operation. जो अभी हम बात कर रहे थे कि operations के साथ कौन से emissions हैं, उसके लिए sustainability consultants hotspot word use करते हैं. ठीक है? So अब जब हम client पे जाएंगे तो we will say we have to check your hotspots, right? And I really love this word. And the second thing is you have to classify कि इसमें से मेरी direct emissions कौन सी हैं और indirect emissions कौन सी हैं. अभी आपने मुझे कहा electricity, जो coal use हो रहा है, natural gas और electricity अगर तो manufacturer खुद बना रहा है तो मेरी अपनी है, लेकिन अगर grid से आ रही है तो मेरी अपनी, तो scope 2. And the third is we have to categorize just like direct expenses, indirect expenses and blah, blah, blah. So the definition is बड़ी ही मजे की है. मैं like I always tell to the team when they come with a query, मिस समझ नहीं आ रहा ये emissions कहाँ पे जाएंगी, तो I just ask, is the emission is owned and controlled? बेटी है, I'm sorry. So direct emissions are emission sources owned and controlled by reporting company, right? And indirect emissions are all the emissions which are not owned and controlled by the reporting company. आसान है अभी तक यहाँ पे? Is the third party is your owned and controlled? You answer me. You give the answer. Yeah. So थोड़ा सा और देख लेते हैं. Scope 1 emissions में क्या क्या आता है? Very much important thing, sources owned and controlled by the company. Plant and machinery अगर आपकी अपनी है, उसमें आप fuels खरीद कर use कर रहे हैं, तो this is your emissions. लेकिन अगर आपने factory के अंदर ही outsource की हुई हैं गाड़ियां, you don't want to invest on the vehicles,
आपने गाड़ियां की हुई हैं, वही उसमें ऑयल डालते हैं, वही सारा कुछ करते हैं, तो वो कहाँ पे आएंगे? जी सर, कहाँ पे आएंगी? Scope 3, we have advanced people here, by the way. So scope 3, indirect expense, right? So simple, very simple, owned and controlled by the reporting company. This is the like pet statement when you have to decide direct and indirect emissions. एक यहाँ पे exclusion दी है S2 ने, and I really want, sir, बायोफ्यूल बताएं कि बायोफ्यूल को अलहदा क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन में। S2 कहता है सारी एमिशंस लाओ, नेचुरल गैस की, कोल की, सारे फ्यूल्स की। एक है बायोफ्यूल जिसको डाल लो एमिशंस में, लेकिन थोड़ा सेपरेट डिस्क्लोज कर दो। लेकिन वो फ्लैग से उसको एसोसिएट किया हुआ है, जहाँ पे इसमें सर आसान वर्ड्स में देखिए, मैं आज बड़ी आसान बातें हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे लिए आसान है, अब आप उसको किस तरीके से कह दें। एक अलग कैटेगरी है जो जिसको अलग से ही डिस्क्लोज करना ज्यादा मायने खेज है। तो दैट्स द मोस्ट। मैं अब मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं भी लाइक आई एम योर स्टूडेंट आल्सो। Excuse me, या सर, it's not fossil fuel based, so there's no. फॉसिल फ्यूल क्या होता है फरूख साहब? फॉसिल फ्यूल क्या है? मेरा इंतजार यही है ना, बट फॉसिल फ्यूल जो है वो बेसिकली जो आपके अंडरग्राउंड So, yeah, please help us. So the fossil fuels are, which is the general fuels we have, like the coals and etc. The fuel, like general electricity and fuels that we have. So the reason the biofuel is that because due to the photosynthesis, the property like with the carbon dioxide we are emitting, we get back in the form of oxygen and back to the environment. So that's the reason the emission is not up to that part that it's. Yes, so मुझे correct कीजिएगा sir. Fossil fuels का जो age है, aging time is much more than biofuels. ठीक है? जब आपका कोल बर्न होता है ना, तो उसकी emission की जो intensity है वो as compared to जो आप राइस हस्क या एग्रीकल्चर वेस्ट को बर्न करते हैं, द इमिशन इंटेंसिटी इज डिफरेंट, क्योंकि उसने इतना कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर डाला ही नहीं है कि वो उतना इमिट करे। जबकि हम जो कई 100 सदियों सालों से बॉडीज, एनिमल, ह्यूमन, ट्रीज, प्लांट्स जो जमीन में जाते जा रहे हैं और वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की हुई है। तो जब वो एमिट होंगे तो डेफिनेटली एमिशन इंटेंसिटी विल बी हायर। एम आई राइट? थैंक यू। सो स्कोप 1 इज क्लियर एवरीबॉडी? या जी सर। दिया आपने रिगार्डिंग फ्लीट कंपनी की, जिसमें we outsource the freight activities to someone else, और उसको आप स्कोप 3 में लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल ये कि वो जो फ्रीट कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं उस पर तो आपका कंट्रोल होता है, आप डिसाइड करते हो उसको कब आना है, कब लेके जाना है, कहाँ से ट्रेवल करना है, किस जगह लेके जाना है। तो व्हाई डोंट यू क्लासिफाई दैट एज अ स्कोप 1 एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, रादर यू आर क्लासिफाइंग एज सो वी हैव टू एक्चुअली रन। तो मैं तेज तेज जवाब दूंगी। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा ओन्ड और, तो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। ओनरशिप की भी आपकी अपनी है और आपका कंट्रोल भी है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। वो ना तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल मेरी अपनी है, हाँ जब हम लीजेस में अगर जाएंगे तो वो थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन आज की बेसिक क्लास में भी हम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। लेकिन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, नॉट और, राइट? सो यू हैव टू मीट दिस टू रिक्वायरमेंट्स। स्कोप 2 सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहे हैं हम, बहुत सिंपल स्टोरी है। इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहे हैं फॉर हीटिंग, कूलिंग, स्टीमिंग, तो दैट कम्स अंडर स्कोप 2। यला क्विक। वो फरूख साहब गुस्से से देख रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है ना सर? Can you just hold your question for question answers, please? I would request, huh?
और अदरवाइज डिनर मैंने तो करना नहीं है, बातें करेंगे हम लोग, या So scope 3, so scope 2, no confusion, जितनी भी purchased electricity है. अब मैं कह रही हूँ purchased electricity. पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया हुआ है, आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने अपना ओन इन हाउस पावर हाउस लगाया हुआ है, राइट? तो मुझे आप बताएं कि वो स्कोप 1 होगा या 2? ऐसे बताएं, 1 और 2. Because that powerhouse is owned and controlled. So स्कोप 2 में हम उसी को इंक्लूड करेंगे जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल की केस में. देखिए, हमें डिस्क्लोज सारा कुछ करना है, ये मैं बता दूं, ठीक है? तो वो टारगेट्स में आ जाता है, टारगेट्स में आ जाती है वो चीज. तो अगर हम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखें तो यस, इट इज आल्सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज कर रहे हैं उससे एमिशंस कितनी है. अच्छा, यहाँ पे चले मुझे बताएं रिन्यूएबल एनर्जी की एमिशंस क्या होती हैं? नहीं, आप बताएं ना. अगर नहीं, फॉर द ऑडियंस मेक इट क्लियर ना. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं तो भाई एक कॉमन क्वेश्चन है कहीं पे लग रही कि अक्सर हमसे पूछा जा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री ले लेते हैं जहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो उसमें कोई फॉसिल फ्यूल्स या कोई भी इस तरह की जो है ना वो बर्निंग नहीं हो रही, तो यानी कोई इमिशंस ही नहीं है जीएचजी के. बट अगर मैं उसको लेकर आऊं अपने स्कोप 2 के अंदर तो विल दैट मेक एनी सेंस के उससे कोई इमिशंस ही नहीं हो. अच्छा, हमने अभी एक बात की कंप्लीट इन्वेंट्री की, ठीक है? तो सोलर एनर्जी से जो कुछ भी आ रहा है और आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, आपको लाना तो है. मेरा एक छोटा सा मैंने आपको सवाल किया था कि ऑडियंस के लिए भी क्लियर कर दें कि सोलर पैनल या विंड पावर इनकी एमिशंस क्या हैं? 0. या सो आप मुझे एक बात बताइए कि आप ये तो नहीं करते ना कि आपके जो कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस हैं कि 0 हुआ खत्म कर दो. नो, वी हैव टू डिस्क्लोज, ठीक है? एंड सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करूं कि I will definitely request all of you, being the future sustainability consultants, please नेपरा की रिपोर्ट देखिए. नेपरा जो आपको इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इट्स नॉट ओनली नेचुरल गैस, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ फ्यूल्स में सोलर एनर्जी भी है. व्हाई दे आर डिस्क्लोजिंग दैट? अच्छा, I didn't see Because that. here, the grid factor determines everything in factors in everything. So if there are renewables into the production, Mhm. your grid factor, when it is used, if you're using the right grid factor, it will take that into सर account. होल्ड कर ले, सवाल फैक्टर्स पे आते हैं अभी. No, I'm just explaining. या थैंक यू. Renewables are part of the grid. So therefore, when you have more renewables coming from the grid, your grid factor will change या and you will Sir. take that. सो अभी तो अगले 5-10 मिनट में सर ने जो बोला है वो हमें क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस. ओके, सो यहाँ पे वी हैव हियर अब कैलकुलेशन कैसे करनी है. वी हैव 2 अप्रोचेस ग्रिड्स को लेके. जैसे अभी सर ने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे नॉट ओनली द नेशनल ग्रिड, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स प्राइवेट भी होते हैं, राइट? आई थिंक वी हैव स्टार्टअप्स हियर आल्सो इन पाकिस्तान जो कि आपको सोलर पैनल जनरेटेड और हाइडल और विंड पावर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं. दिस इज नाउ द कंज्यूमर जिसने डिमांड को इंक्रीज करना है. So we have this thing. अगर किसी कंट्री में सिर्फ द नेशनल ग्रिड ही है तो we will simply go, we will look at कि नेशनल ग्रिड ने किस किस सोर्स के साथ एनर्जी प्रोड्यूस की है. हम उस सोर्स की एमिशंस देखेंगे और हम कैलकुलेट कर देंगे. मैं फैक्टर पे अभी जाऊंगी, ठीक है? और अगर हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां पर नेशनल ग्रिड भी है, सोलर पैनल से भी आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी यूज हो रही है, लाइक मिक्सचर ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल्स आर जो कि फ्यूल्स जिनके एमिशंस बहुत ज्यादा है. रिन्यूएबल्स जो आप रिसाइकल कर सकते हो, उसकी एमिशंस नहीं है, नथिंग इज गोइंग इन द एनवायरनमेंट, स्टफ लाइक दैट. दैट्स नॉट आवर टॉपिक बाय द वे. तो you are given 2 approaches, location based, जो मैं अगर सही कहूँ तो इस वक्त पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है. अगर मैं यूरोप की तरफ जाऊं और इवन
यूरोप की तरफ जाएं और सिंगापुर की तरफ जाएं, मलेशिया की तरफ जाएं, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है गवर्नमेंट लेवल पर, वहां पे आपको मार्केट बेस लाना पड़ेगा। तो जब आप एमिशंस देखोगे, आप देखोगे कि नेशनल ग्रिड ने किस फ्यूल को यूज किया है, इसकी कितनी एमिशंस हैं, सोलर से कितना यूज हुआ है, विंड से कितना यूज हुआ है। तो यू हैव टू अपनी इन्वेंट्री में सारा कुछ लेकर आना है। परेशान नहीं होना, सब कुछ अवेलेबल है, डेटाज आर देयर, डेटाबेसेस आर देयर। ठीक है, हमें हमें कुछ भी खुद से नहीं कैलकुलेट करना। या सो नाउ स्कोप 3 सिंपल करते हैं। जो स्कोप 1 में नहीं आ रहा, जो स्कोप 2 में नहीं आ रहा, वो स्कोप 3 का है, दैट इज योर वैल्यू चेन, राइट। जो अभी हमने बात की कि हम फ्रेट एंड व्हीकल यूज कर रहे हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ परचेज्ड मटेरियल्स, परचेज्ड फ्यूल्स, तो ये सारी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एमिशन है, स्कोप 3 है, राइट। और S2 हमें ये कह रहा है कि पहले साल, क्योंकि ये डेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, रिपोर्टिंग कंपनी के कंट्रोल में वैल्यू चेन का डेटा होता है, राइट। आप लोग कंफर्मेशंस भेजते हैं थर्ड पार्टी को, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स आता है कि एक दो रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं? लेकिन 100% तो जल्दी नहीं आता है ना, राइट। तो कोई भी डेटा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको निकालना ट्रस्ट में बहुत डिफिकल्ट है। एंड गुड थिंग रेगुलेटर्स, स्टैंडर्ड सेटर्स नो दिस। तो S2 में आपको एक रिलीफ मिला है कि फर्स्ट ईयर की रिपोर्टिंग में आप स्कोप 3 को रिपोर्ट मत करो, सिर्फ स्कोप 1 एंड स्कोप 2 जो कि आपके कंट्रोल में है, उसको आप मेजर करो। So just for your knowledge, scope 3 में upstream and downstream emissions हैं, sources हैं, देख लीजिए। अगर कोई भी किसी का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, ऑयल कंपनी क्लाइंट है, आप लोग इजीली वैल्यू चेन को डिजाइन कर सकते हो कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा। प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट बना और कहाँ पहुंचा। So finally, हमारी 3 कैटेगरीज है, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एमिशंस, इनडायरेक्ट एमिशंस। फर्स्ट रिलीफ वेरी इजी फॉर अस कि फर्स्ट ईयर में हमने नहीं करना। और फर्स्ट ईयर अब जैसे जो ICAP ने प्रपोज किया है कि स्टिल वी हैव 1 year टू लर्न मोर, अंडरस्टैंड मोर, क्योंकि ICAP is proposing to start the application and adoption of S1 and S2 from January 2025. So we still have time to learn, to get ready, being consultants or being chartered accountants. अभी तक कोई चीज मुश्किल आई है? सारा कुछ लग नहीं रहा जैसे वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस। अगर हमें बिजनेस की नेचर का पता है, स्ट्रक्चर का पता है, हम इजीली इन्वेंट्री देख सकते हैं, राइट? सो स्कोप 3, ये मैं फिर कहूंगी मेकअप स्लाइड है क्योंकि थोड़ी एडवांस है। स्कोप 3 के लिए स्टैंडर्ड कहता है 2 तरह के डेटा है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। क्या दिमाग में आता है सर? एनीबॉडी फ्रॉम बैक? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा से दिमाग में क्या आता है? वन लाइनर। Primary data is something that you have gathered by yourself, and secondary data can be any data that has been fetched from any resource, for example, an internet resource or a newspaper. Very good. Averages, industry data and stuff. Okay. So यहाँ पे primary data is supplier provided data, actual data. मैंने आपको एक बात कही थी, value chain को दिमाग में रखें। तो वो आपका रिटेलर है, आपका बायर है, आपका सप्लायर है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट साइड है। जो डेटा वहां से आ रहा है, दैट इज सप्लायर प्रोवाइडेड, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। और जहां पे आप इंडस्ट्री एवरेजेस यूज कर रहे हो, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। सो स्कोप 3 का भी एक स्टैंडर्ड है, वो भी हम कवर करेंगे लेटर इंशाल्लाह। Scope 3 report करने का there's a standard by greenhouse gas protocol. So उसमें you just have to see
कि आपके पास कौन सा डेटा इजीली अवेलेबल है जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, जिसके लिए आप कह सकते हो कि या आई कैन बी श्योर दैट दिस इज मोर नियर टू एक्यूरेट। तो आप इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस लोगे, या फिर अगर योर सप्लायर इज ऑलरेडी इन दिस सस्टेनेबिलिटी थिंग एंड दे आर मेंटेनिंग द डेटा, तो यू विल गो फॉर इट। मैं एक बड़ा क्विक सा सवाल करूंगी सर आपसे, नो द गाय बिहाइंड, सर आपसे, या आपको क्या लगता है स्कोप 3, मैं बिजनेस हूं ए, मेरे सप्लायर्स हैं एक्स वाई, और मेरे आगे जो वैल्यू चेन है वो है डी एफ, राइट? आपको क्या लगता है स्कोप 3 क्या है, मेरा स्कोप 3 क्या है? देखिए जो मेरा स्कोप 3 है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो मतलब मेरे यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, आई नो। मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरे आगे की जो वैल्यू चेन है, ठीक है, सो मे बी दैट कुड बी माई स्कोप 3, बिकॉज जो मेरे पीछे जो सप्लायर्स हैं तो उनका तो ये कि वो तो मेरी डायरेक्ट प्रोडक्शन पे उनके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो इम्पैक्ट्स हैं वो हो सकता है जो मेरे कंज्यूमर्स हैं उन पे आ रहे हो। वेल एलैबोरेटेड सर, आप इजी करेंगे इसको? सो मेरी वैल्यू चेन का जो स्कोप 1 एंड 2 है वो मेरा स्कोप 3 है। Yeah. So if every organization in the value chain, they are doing the calculation of scope 1 and 2, and they are already on the journey of this calculation and data, scope 3 का हमें data industry averages नहीं, supplier provided data मिल जाएगा, right? I just fetch 2 disclosures for you. हम इस तरीके से report करते हैं. In the first example, it's estimation based. अच्छा, मैं यहाँ पे quick सा बताती हूँ. Estimation based. मुझे नहीं मिल रहा supplier का data, especially पाकिस्तान में. Do you think farmer is keeping the data? हाँ? या freight वाले जो हैं transportation companies data maintain कर रही है. Let's go for estimations. So databases हैं आपके पास कि इतनी वैल्यू की अगर आपने कॉटन खरीदी तो उस कॉटन की फार्मिंग लेवल पर एमिशंस क्या है. यू जस्ट हैव टू गो इनसाइड द डेटाबेस, अपनी रिक्वायरमेंट उठाएं, उसको लेकर आए और आपका स्कोप 3 कैलकुलेट हो जाएगा एस्टिमेशन बेसिस. मैंने सिंपल वर्ड में बताया, इससे सिंपल हो सकता है क्या? कोई कंफ्यूज हुआ इस बात से? सो जो मेरा जो हम ICAP की भी एक लेटेस्ट में स्टेटमेंट देख रही थी कि इट्स सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट इज एक्चुअली द फाइनेंस डिपार्टमेंट. द डेटा इज इनसाइड फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड दैट्स करेक्ट. आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कहाँ से मिलेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से. और वो क्या है आपका स्कोप मिस 2, राइट? आप जो स्कोप 1 में आप फ्यूल खरीद रहे हैं, आप जनरेटर का ऑयल ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है डेटा? कहाँ पे आपको डेटा मिलेगा? सोर्स क्या है? कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंस. So finance people are actually the sustainability consultant. They are the base जहाँ पे सारा डेटा पड़ा हुआ है. और scope 3 अगर हम estimations पे जाएंगे तो we need finance department. Now just think for a minute. Do you think being a finance person, chartered accountant, CFO, do you think कि आप लोगों को कुछ छूट मिल सकती है not to learn this thing? No. So there is no excuse. You have to learn it because आपसे डेटा मांगा जाएगा. आपका जो बायर है, सप्लायर है, रिटेलर है, या जो भी वैल्यू चेन का, वो आपके पास आएगा कि मुझे डेटा दो बिकॉज मुझे अपने एमिशंस कैलकुलेट करनी है. या अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी डेटा कैलकुलेशन हो रही होगी तो आपका जो इस वक्त कंप्लायंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है या सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, उन्होंने डेटा हमसे ही लेना है. So we are the owners of sustainable data. खुशी हुई है? एक और सर्विस लाइन है हमारे पास. And that's the most famous picture. पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, right?
डबल काउंटिंग ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाती है कि जो मेरा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है वो किसी दूसरे का ओन्ड एंड कंट्रोल तो हो नहीं सकता, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी मैं ग्रिड से परचेज कर रही हूँ वो मेरी एमिशंस हैं, जो फरूख साहब अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं वो उनकी एमिशंस हैं, जो आप कर रहे हैं वो आपकी। सो डबल काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। डबल काउंटिंग का आएगा प्रॉब्लम स्कोप 3 में, थोड़ा एडवांस है, बात में करेंगे। क्विक बेस ईयर, जल्दी सर, टाइम है अभी 5 मिनट। ओके, बेस ईयर। अब क्या करें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन, कंपैरेबिलिटी वो सब कुछ करते हैं ना, राइट। तो सबसे पहली रिलीफ तो ये है कि फर्स्ट ईयर में आपने कंपैरेटिव फिगर्स नहीं देनी, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको एक बेस ईयर चाहिए है जिसकी कंपैरिजन में आप आगे अपनी पूरी ट्रैकिंग बिल्डअप करोगे, राइट। तो क्विक सा कि अगर आपके पास 3 साल है तो जहां पर भी आपके पास मोर मैच्योर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, ट्राई टू मेक एज योर बेस ईयर, नॉट बेस लाइन, बेस ईयर। और उस बेस ईयर को हम अगले साल का हमारा कंपैरेटिव फिगर आ जाएगी। स्टैंडर्ड आपको कहता है कि अगर आप नहीं श्योर हो तो एवरेज ले लो, बट स्टिल दे आर प्रेफरिंग टू चूज 1 ईयर एज योर बेस ईयर। दे आर आस्किंग इफ यू वांट, बट प्रेफरेंस इज 1 बेस ईयर। सो जस्ट लाइक, अब क्विक सी बात, मैं इंटरलूप की रिपोर्ट देख रही थी। इंटरलूप सब फेमिलियर है, वन ऑफ द एक्सपोर्टर, राइट। इंटरलूप की रिपोर्ट देख रही थी और दे आर लाइक सेइंग कि हम नेट जीरो पे जा रहे हैं सब कुछ, एंड आई सॉ कि एकदम से उनकी एमिशंस बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब वो तो टारगेट्स ही नहीं मीट कर रहे। सो दे गिव अ डिस्क्लोजर दैट यस हमारी एमिशंस बढ़ी हैं बिकॉज वी डिड इन्वेस्टमेंट इनटू अ न्यू फैसिलिटी, हमने एक और प्लांट लगाया है और हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है इस वजह से, राइट। सो दिस डिस्क्लोजर वाज देयर। अगर ये मटेरियल बात है, यू हैव टू डिस्क्लोज। अगर ये इवेंट आपका ऐसा है जिसके लिए आपको बेस ईयर को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करो। अगर ये बेस ईयर के एडजस्टमेंट नहीं है, मत करो, राइट। सो कौन कौन से केसेस हैं जहां ट्रिगर होता है कि बेस ईयर रीकैलकुलेट करनी है? आई जस्ट रीड इट क्विकली क्योंकि सारे हमारे अकाउंटिंग की कंडीशंस हैं। मर्जर, डाइवेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और चीज के लास्ट ईयर इन्होंने क्लाइंट किया और इस साल मेरे पास आ गया, राइट। इनको नेशनल ग्रिड का एमिशन फैक्टर ही सही नहीं पता था, जिसकी वजह से स्कोप 2 जो है ना वो बहुत ही अंडरस्टेटेड आया। इन्होंने कम कम एमिशंस लगा दी। जब मैं आई तो मैंने देखा कि नहीं यार, इनसे मिसिंग हो गई है। सो अंडरस्टेटमेंट को मुझे फिक्स करना है, मैं पीछे जाके उसको रीस्टेट करूंगी, राइट। So timing of recalculation, this is also कि try to avoid duplication of work. अगर middle of the year में आता है तो पूरे साल का कर लो, like it's a standard words. So this is just a quick wrap up. Identify source. आपकी approach कौन कौन सी है? Quick. जल्द से हाथ खड़ा करें, approach कौन कौन सी है? Perfect. परफेक्ट। और उसके बाद आपने डेटा चूज करना है, कलेक्ट करना है, उसको कैटेगराइज करना है। और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ने आपको टूल्स दे दिए हैं। अब ये जो टूल्स की बात कर रही हूँ ना, दोज आर द एक्सेल शीट्स, वो सारी कनेक्टेड है आपस में। आपने उसमें सिर्फ फ्यूल की अमाउंट डालनी है, वो आपके एमिशन कैलकुलेट कर देगा। तो टूल्स आर देयर। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस। अब ओके, सो दैट आई हैव टू मिस बिकॉज उसको लैपटॉप से करना था। एक्टिविटी डेटा क्या है? जनरेटर चल रहा है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी डेटा क्या होगा? जल्द से बताएं क्योंकि टाइम कम है। गैलन्स में पेट्रोल या डीजल गैलन्स में, तो दैट्स योर एक्टिविटी डेटा, ठीक है। एमिशन फैक्टर क्या है कि उसमें कितनी ज्यादा गैसेस का इंटेंसिटी निकल रही है। डेटा बेसिस हैं ये, हमने वो जाकर सिर्फ देखना है डीजल यूज्ड इन पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान का नहीं है तो नियर बाय कौन सा बेस्ट पॉसिबल है, उसका वो फैक्टर लेना है, उसको एक्टिविटी डेटा से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी उस गैस की एमिशन आ जाएगी।
लेकिन एक चीज मैंने शुरू में कही थी कि हमारा एक यूनिट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंस। हमने सारे सिबलिंग्स को बराबर लाना है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वहां पर हमने एक चीज यूज करनी है, GWP, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सर जल्द से बता दें क्या है, एक लाइन में। Okay, so global warming potential is कि कोई भी गैस इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट में कितना ज्यादा लंबा और इंटेंस हार्म करती है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, राइट? तो हमने देखना है, हमने यूनिट बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड को और देखा कि इसके कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन कितना कितना ज्यादा करती है। उसके लिए भी हमें परेशान नहीं होना। हर साल एक एजेंसी कह ले, IPCC, बेचारे वो बैठकर जो है साइंटिफिकली इसको हमारे लिए कैलकुलेट करके हमें दे देते हैं। So these are the sources जहां से आपको emission factors मिलेंगे। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, डेफ्रा जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है पाकिस्तान में, राइट? सो डेफ्रा इज फ्रॉम या सो यूके ने एक डेटाबेस क्रिएट किया है हर फ्यूल का emission इंटेंसिटी। हम वेबसाइट पे अवेलेबल है, बाय नहीं करना, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज जाकर या कल जाके घर जाके डेफ्रा को देखिएगा और जरा उसके साथ दोस्ती कीजिएगा। एंड अगर हम हायरार्की देखें तो लोकेशन बेस के लिए वी हैव फर्स्ट टू सी कि अगर जैसे कराची का ग्रिड अपना उसकी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है तो उसको पहले देखें, वहां फ्यूल्स क्या यूज हो रहे हैं। अगर नहीं है रीजन का तो गो फॉर नेशनल। और मार्केट का तो मैंने बताया ही है कि अगर 3 4 5 सप्लायर्स हैं तो वो सारे अपना अपना डेटा हमें देंगे कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी किन फ्यूल से बना रहे हैं। So I told you कि IPCC, इंटरगवर्नमेंट इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये हर साल एक असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं जिसमें ये रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज आती नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज आती नहीं है। तो ये तो जितने भी ये 4 फिगर्स तो हमें याद करना बड़ा आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड 1, मीथेन इज 28, नाइट्रस ऑक्साइड 265, and then these are the fixed figures, but every year very minor changes are there। तो हमें देखना होता है अगर मटेरियल होगी तो हम, but try to use the latest data। Yeah, मैं डिटेल्स में नहीं अभी जा रही। इस तरह से ये टूल्स दिए हुए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल में आप जाएं, आपको वहां पे एक्सेल शीट्स मिलेंगी जिनको टूल्स का नाम दिया गया है। वो सारी इंटरकनेक्टेड हैं, ऑटोमेटेड हैं। आप सिर्फ एक्टिविटी डेटा डालेंगे, एमिशन फैक्टर चूज करेंगे और आपकी एमिशंस कैलकुलेट हो जाएंगी। अब मैं उस तरफ नहीं देख रही, आई एम जस्ट लुकिंग एट द स्माइल। सो ये एक एक्सेल शीट भी आप देख लें ताकि फेमिलियर हो जाए। दिस इज कॉल्ड टूल एक्चुअली, या। और फिर जो भी आपकी अप्रोच है, चाहे डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, जैसे अगर आपकी लाइक जियोग्राफिकली स्प्रेडेड ऑर्गेनाइजेशंस है तो डिसेंट्रलाइज आपको हर एक का डेटा लाकर उसको यूनिटरी मेथड के साथ इनकॉर्पोरेट करना है, कंसोलिडेट करना है। और रिलीफ तो हमें पता चल ही गई है कि पहले साल में हमें स्कोप 3 की रिलीफ है। तो आपके पास एक्चुअली 2 साल हैं टू लर्न स्कोप 3। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजे का स्टैंडर्ड है। इज अ पोइट्री फॉर अस, राइट सर? बिल्कुल पोइट्री है, रिदमिक। एंड देन और हमारी क्या है, yeah, another very important relief for the first year yeah, use IFRS S1, use, but only report climate related risks and opportunities. Learn more, continue to more, invite me here and I teach you more. Thank you. And indeed, what a session that was. That does deserve a huge round of applause. And on behalf of honestly everyone sitting in the audience, the interaction, the knowledge, it was a complete package. And yet the learning process continues. We still have more speakers, so I hope you're all ready for more learning. And allow me and welcome, if we can have on screen as well, our next and last keynote speaker for tonight. And she is the head of initiative, Center of Excellence in Responsible Business, Pakistan Business Council. Please welcome Ms. Nazis Sheikha on stage with a round of applause.
First of all, I'd like to thank ICAP for giving me this opportunity to present. I represent the Center of Excellence in Responsible Business, and that is part of the Pakistan Business Council. Just a little a few words about my organization. For those of you who are not aware, the Pakistan Business Council is a research-based advocacy platform of over 100 businesses. And what we do is advocate on how to improve the economy as a whole. And over the years, what's become very important to us is how environment and social indicators are also linked to the economy and can either help the economy improve or slow down the economy. So that's what we do at the Center of Excellence in Responsible Business. So I've been tasked today to talk about a topic that is called finance emissions. And after Fauzia's presentation, I think you might find my presentation a little dull, but feel free to contribute if there's anything that you'd like to add. Just as a little background, I'm also going to start off with a little bit about IFRS S2, but then I'm just going to focus on finance emissions. Just a little bit about IFRS S2. I think Fauzi has gone into it in a lot of detail. Just that we've talked about what will be required to disclose in terms of the GHG inventory, but the S2 has a lot more as well that will be required to disclose. We talked to, I think Fauziya mentioned it in the beginning in terms of risks and opportunities and how important that is to disclose on. So whilst it's very important to start with the baseline, which is the GHG inventories, but beyond that, we also need to be aware of the risks and the physical risks as well, and the transitional risks that a company can face because of climate slowdown, because of climate-related let's just say legislation or regulation or, customer requirements. So this is also very important. So when we talk about in terms of IFRS S2 and the topic of today, it's very important, as Fauziya has explained, it's important to look at scope 1 and 2 and 3. And what scope 1 and 2 is, we're very clear with, and we're also very clear with what scope 3 is. But there is a certain part of scope 3, which is called financed emissions. And they are very important to certain companies and groups of companies. Can anybody point out which groups they could be? Yes, and insurance sector. All right, so the commercial banks and asset management and the insurance sector. So a couple of years ago, we were doing a session and there were a couple of people from the insurance sector there. And when we were teaching them how to calculate the GHG emissions, they were very confused. They thought they were attending the wrong workshop. They were like, "हम लोग का तो scope 1 and 2 होता ही नहीं है, बहुत कम होता है. Scope 1 में तो हमारी almost zero होगा. Scope 2 भी, whatever we buy from electricity is very negligible compared to what the manufacturing sector." And so we said, no, but whatever you finance would be scope 3. And then, it dawned to them why it's important for them to look at their own GHG emissions as well, and the role the financial sector can play in getting to net zero or reducing emissions. So first, the IFRS S2 requires, obviously, as we talked about, to measure GHG emissions in terms of the corporate accounting and reporting standard. And in particular, it requires that companies start
disclosing, even though we have been given a leeway of 2 years, that doesn't mean that we start 2 years later to start measuring the scope 3 emissions. This leeway is important to start building our own inventory of where we can get the data, what data is there, what data isn't there. So this leeway shouldn't be thought of as, okay, we don't need to think about this now, let's look at it 2 years later. It's just a leeway to transition you into the process of reporting. All right, so, and then scope 3 is that, and then additional information is also required from the banks, asset management companies, insurance companies about how they're financing their emissions. My presentation is cutting off at the end. Hopefully it'll make sense. So we've gone into scope 1, scope 2, and scope 3 in detail. But when we're talking about financed emissions, it's basically referring to the downstream end. And in the next slide, I'll show you how, basically. Is there a way to adjust the presentation? The bottom part is being cut off. Okay, thank you. Shall we, वो full उसमें हो जाएगा? All right, okay, then उसमें कर दें. अभी तक कट या तो उसमें ही कर दें. Okay, so the downstream emissions that occur as a consequence of the organization's products or services. So in that, when we're looking at the banking and the other financial instruments, is the products and services that are offered through the banks or insurance companies or, you know, asset management companies. And these in the GHG protocol have been defined under scope 3 category for 15 investments. So what's the importance of finance emissions? Basically, they've been identified as making finance flows consistent with low GHG emissions and a climate resilient pathway. And this was decided at the Paris Agreement. So for those of you who don't know, the Paris Agreement was in 2016, it was then decided that companies would focus towards net zero and then net zero by 2050. And I mean, the world should focus towards net zero by 2050. And then all of the different sectors would have a different role to play in it. And then it would all come together in an overall holistic accounting measure. So that's a link to the Paris Agreement. So when we're talking about GHG emissions as well, it's also very important to see that finance emissions are related to loans, underwriting, investments, and other financial services. I'm just going to give you a very short overview of finance emissions today. And this is where, when we look at scope 1 and 2 and 3, which has been defined by the GHG protocol, the red circle is where this falls under the scope 3, and it's under downstream activities. So, okay, the financial sector obviously has to report on their scope 3 emissions, but also as an organization, if you're investing somewhere, those will be your finance emissions as well. So now when we look at why it's important to look at the accountability and why finance emissions are important, even though they're not actually making those emissions, because it's been sort of accounted for and it's been researched upon, and data has been collected that
even a bank's emissions will be perhaps 3, and then the overall emissions would be like 2,100 times or so basic 2,100. So every single emission will be 700 overall emissions of a bank would be 700 times more than its own sort of operational boundary, as we call it. So there's a lot of data available online, and I'm not going to go into separate assets classes because you need a whole day to go at least start working on that. And I'm not an accountant here. Fawzia was, so I can't teach accountants accounting. So I'm just going to talk about a little bit about where you can get that information from, and the PCAF, which is the I'm just going to read it out what it is because which is the Partnership for Carbon Accounting Professionals. They've identified 6 asset classes, and they've identified formulas for them to identify what emissions would be. So we've talked about getting a basic emissions through the GHG protocol. Now we go a step further and we identify how those emissions can be linked to an organization through scope 3. So this is a snapshot of how they're listed on their website. I would request, once you go through this presentation and you go home, I would request you to go and have a look at their website as well. But the basic premise for the emissions is basically this formula. So if you're giving, basically the basic premise is that if you're lending money to an organization, so you calculate the amount of emissions emitted from the amount of money that you lend. All right, so then you would have to go back to your balance sheet and see how much, how much that money makes part, what percentage of that loan or investment, as it's called, is part of that overall income of that company. And then from that, you basically identify, you multiply it by the emissions generated by the company, and you would get the percentage emissions that's for your organization or your bank. And then in total, what you do is you add all of these together as a bank, and that would be your finance emissions. So in a portfolio, if a bank has been mandated by its regulator to reduce its emissions, it would start looking at investing in places where there are reduced emissions. So it won't go for financing in coal power plants, which is something that we hear that a lot of banks are not ready to do now. So that is why, because then its own emissions would get higher, but to reduce, because it has to put a cap on its emissions and its net zero commitment, that's why the banking sector or other investors are now using this tool to calculate the emissions. All right, so that's a general formula for it. For each asset class and for each process, there's a slightly modified formula, but that's the formula that they use. And so when we're doing this, what's important to see is that there has to be a specific approach to finance emission calculations. And that's where the 5 principles that Fawzia talked about, completeness, accuracy, they all come in. And this process should be followed to calculate the emissions and to ensure that the data is accurate and complete. So first, obviously, you analyze the scope and boundary. So as
Fawzia talked about, there's three types of boundaries. And then with that, you also try and see where the industries, geographies, where your customers are who are buying the product. So that's basically understand, where you are and where you want to be, basically. So you do a benchmarking or a background research of where you are. And then after that, you basically develop a transparent set of assumptions. So the main assumptions would again be based on the approach that you use. So the banking or the investor would have a particular approach, and they would say, okay, we're just looking at operational approach of an organization, or we'll use the equity share approach, or we'll use a financial approach. So that's where you decide where you want to invest in. And then other factors also come in. Those factors include specific, basically the formula or the methodology that you get to calculate your emissions. So those factors are very important in the sense that I've gone through a lot of data about the banking sector globally. And, HSBC has published its own process on showing how they calculate their finance emissions, and they've done it for various geographies as well. So there's one for the Middle East. The HSBC Bank has made it for their Middle East bank, and then there's obviously for the European. And so this is basically your transparent set of assumptions. And as a lender or an investor, when it comes to reporting according to the IFRS S2, those assumptions will also become part of the report as well. And then source the available data. As Fawzia identified, data can either be primary or secondary source. There's lots of databases globally that you can use to identify data that you don't have. A lot of the time when you're investing in small and medium enterprises, you'll have to basically do the calculations yourself. I know that these issues are when the banking sector here is now implementing the GBG, Green Banking Guidelines and the ESRM, they're having this problem because obviously when they want to lend to organizations, those organizations don't know their emissions. So they would internally now need to calculate their data or support other organizations to calculate their data as well. And then finally, after all of that, you calculate your emissions. So that's the entire process, the general approach to finance emissions calculation. I think that's enough for today, considering that we've just learned how to do the GHG inventory. So it just gives you an idea of what's required. Again, when you look at the IFRS S2, the financed emissions or the emission calculation or the reporting, it also follows this sort of diagram that has been shared by the Partnership for Carbon Accounting for Financials. Obviously, scenario analysis has become very important. We haven't discussed that today. We've talked about risks and opportunities, but scenario analysis would basically include investing in the long term and financing in the long term, because then you're looking at various scenarios. So right now we're focusing on a 1.5 degree scenario, and that has its own risks and opportunities. But when we look at a 2-degree scenario, a 4-degree scenario, that also needs to be included when you're financing in the long term as well. And obviously, like all other organizations who are going for net zero, it's very important also for banks to do their own, banks and other financial institutions and investors as well, to do their own target setting. And it's become very,
I do know a lot, we do hear globally of a lot of funds that have gone, they said they're reducing their investment in coal, they're reducing their investment in fossil fuels. So those are their targets, and those will again fall into their financed emissions. And if you're not meeting their targets, obviously through disclosure, you will need to give a reason of why you're not meeting them. So what are the challenges? Obviously, there's a lot of challenges. We talked about how easy it is to make a GHG inventory, but a lot of the challenges faced is we don't have available data in Pakistan. And we do have those global databases, but we don't have a lot of local databases. We do hear that the Ministry of Climate Change is working on those local databases that we can use for emission factors. I'll give you an example. A couple of years ago, we were doing an GHG inventory for a company, and they wanted, obviously part of their fuels was straw, and it was local straw. So obviously there was no inventory, no emission factor for the local straw. So what they did was they compared it to wood chips. So that's an assumption that they made. All right, so that has an impact on the GHG inventory. So these are things that become, this is where there's the gaps, and we as institutions together should work to reduce these gaps. And then obviously, our legislation is just coming out. The IFRS S2 is just coming out. So there will, while we say that we have a 2-year window, but I have a feeling that the 2-year window will close very quickly if we don't start working on it today as organizations. And it's very important to see that, in the sort of our export economies where we want to export, like the EU has already mandated the carbon border adjustment tax, which will be applicable to various sectors from 2025 and 2026 onwards. The sectors will include, and then obviously we do have other hindrances as well. We know right now the emission factor of our national grid is very good, but we do know that if there will be some injection of coal, so the national grid's emission factor will grow higher as well. So that's something that is also a challenge for our organizations. And then there's become a general trend amongst firms which is greenwashing. And those firms that are greenwashing will perhaps face the most challenges when they're going to start reporting, because and usually when they there are firms when they greenwash, there are firms that they know what they're saying, but there are firms that think that they are doing right and then they greenwash, but they're not doing right, but they don't have the knowledge. So there's this capacity gap as well. So these are the 5 challenges that we see and that we need to close quickly. And I'm very glad that ICAP is using this opportunities to ensure that these areas are being looked at. So that's what I'm going to leave you with. If you would like more details about finance emissions, I can share you details about where the PCAF and the website. And if you have any further questions, if you would like to discuss this further, or invite SERB to use this opportunity to look at these issues that you're facing related to it, we would be welcome to hear from you. And that's it, folks. Ms. Nazish, thank you so much for giving us your time. And now it is time for my favorite part of every seminar, the panel discussion. I was expecting a bit more of a response, but yes, it is now time for the panel discussion. When you hear the names of the panelists,
You'll probably be applauding more. So to moderate the session, I would like to once again call Ms. Muniza Osman. But as the moderator, let's hear it for Ms. Muniza. Right. And now joining us as the panelists, first and foremost, we have Chairman of the Accounting Standards Board and Education Committee, who is also a council member of the Institute. Please welcome Mr. Farooq Rahman on stage. And next we have a partner, country lead, ESG, climate change and decarbonization at KPMG Tasir Hadi & Co. Please welcome Mr. Syed Ehsan Ali Shah. And now next we have Deputy Managing Director, Pakistan Refinery Limited. Please welcome Mr. Imran Mirza on stage. And now next we have Director, Technical Natural Resources at Sindh Environmental Protection Agency, Mr. Imran Sabir on stage. Please welcome Mr. Imran Sabir. And of course, last but not least, the Head of Sustainability and Climate Change at EY Ford Roads. Please welcome Ms. Sahara Anik on stage. And that is our entire Starstruck panel for tonight. If you have any questions, do ask, feel free, encourage yourselves. Otherwise, I'll encourage you to ask questions, right? So with that said, over to you, Ms. Muniza. Thank you, Babar. So we've had an extremely insightful session, I think 2 sessions, in fact, first from Fawzia and then Nazish. And I'm just short of words because I think I've learned so much in these 2 sessions, which I did not learn by just reading the standards and all. So thank you so much to the 2 of you. Now we're coming to the panel discussion, and you've arranged experts from the profession as well as from the industry. So Zara, if I can please start with you, as they say, ladies first. Okay. Okay. So, talking about the current scenario that we have about the GHG reporting and emissions reporting. So what do you think, because GHG is being reported by, internationally as well as locally, I believe. So what is the current scenario regarding the status of GHG emissions reporting in Pakistan? First of all, Muniza, thank you for giving EY and me the opportunity. And yes, after these presentations, I think they're very loaded, and it has overall, I think, hum sabki knowledge mein izafa hi hua hai. As far as GHG reporting is concerned in Pakistan, I think as far as sustainability reporting per se, the momentum has increased over the last few years. But if we say that there are specific standardized consistency reporting which is being done, I would say even today, there are less than 100 companies who are actually consistently reporting through a specific methodology. These are mostly listed companies and very sector specific as well. So as far as textile is concerned, I think most of the organizations are obviously reporting. Energy organization are reporting, and thanks to our friend Jasipa Bethe hue hain, I think we are, there are few sector-based organizations which are very regularly reporting on their emissions. But having said that, whether the GHG inventory takes into account such a comprehensive inventory, that is questionable as well, because the standards are all voluntary standards. You can include whatever you want to include in your reporting. So we need to also see from the point of view how comprehensive and accurate those reporting are as of now. But we do see that there is a momentum increase. We do see that organizations are now working on their baselines. And there is a general perception that they have to. It will eventually become mandatory. And the regulatory environment is also working towards it. Okay, great. So you just covered the current landscape, I believe. Now, we heard about the scope 1 and scope 2 from Fawzia earlier. So can you tell us the practical steps that companies need to take to report the GHG emissions with respect to scope 1 and scope 2 in the first year and scope 3 later on? I think both of them gave a very comprehensive presentation. So yeah, as far as the realistic scenario is concerned, whatever
it is your direct expense, basically. Whatever direct impacts you are making through your operational, through your operations, basically. For example, I will give you the mera background because energy raha hai. So I will give you the kind of emission which, for example, the utility company of Karachi will report on. That is what kind of impact they are creating through the generation portfolio, what are the losses through the distribution systems, what are the losses through the transmission systems. So these are basically the primary emissions which we will account for, and that should go in the inventory. Then there are secondary ones as well. For example, what kind of fleet you're operating, how those emissions are actually impacting. So that probably will also, because you also control the fleet, that will also be accounted for in scope 1. So it is basically the overall impact which you're creating directly. Scope 2, we all know it is with regards to your operational energy system, how actually you are consuming the energy, and आपके fossil fuels जो हैं systems में कहाँ आ रहे हैं and किस तरह उसको आप calculate कर रहे हैं. So it's more or less very simple if we talk about it, but it all depends on how complicated a specific sector is. Where there are various value chains working together, where there are various production lines working together, it becomes more complicated. So it's not as simple as it sounds right now, because there are various integrated value chains which will work, and eventually the inventory which we need to actually choose is going to become very complicated as well. So it is the baselining, first of all, which is important, and secondly, the GHG inventory as to how relevant it is and how, what is the methodology through which we sift through it, basically. Okay, great. So, Zara, during the course of the seminar, we heard this terminology net zero. So if you can, for the audience, kindly explain the terminology net zero and how would GHG emissions reporting by companies help governments and other companies in achieving their targets? So yeah, net zero is the eventual target. It is the end station of the train, I would say. And I think everyone is aiming towards it. How realistic it is obviously we all need to be on a decarbonization journey. It is a journey, we all know that. And net zero is all about what you're emitting, you should mitigate. Mitigation के various then methodologies हैं. You can mitigate through transitional. आप अपने अंदर adaptations लाएं, आप overall changes करें through the transitional overall incorporated changes, but eventually it is how you actually minimize your carbon emissions. That is the fact. For example, European countries इस वक्त बहुत सारी हैं जो कि net zero की तरफ energy wise जा चुकी हैं. We all know about Norway, we all know about Finland, we all know about Denmark, that eventually जो हमें बहुत unrealistic लगता था कि आपका जो grid factor है वो zero की तरफ जाएगा. इस point in time पे it is becoming very realistic that your grid factor can actually go towards net zero. So yeah, it is difficult, but eventually we all have to move towards it. Okay, great. Thank you. So Farag, if I can come to you now, because we've had the industry speak and now somebody from the profession. So what is the status of adoption of IFRS sustainability disclosure standards in other countries? And what do you expect, the IFRS SDGs to be adopted in Pakistan? What is the current status? Thank you, Minister. I think in terms of Pakistan, this is $1 billion question. When will it become mandatory? I think during the course of the presentations and now response from Zahra as well, this GHG reporting, IFRS standards, sustainability reporting, all these terminologies are known to now all of us. But specifically coming into
area of IFRS standards. Just very briefly to give you the background, because these standards were issued on June 26, 2023. And since then, there has been a momentum around the world where country by country, jurisdiction by jurisdiction, there has been debate, discussion, deliberation, and many of those jurisdictions have come out publicly and have made statements about how they're going to achieve the adoption and implementation of IFRS sustainability standards. The IFRS sustainability standard has been a market demand, and this forum of ISSP, International Sustainability Standard Board, since they have given this framework, so ISCO has also kind of endorsed that. They have written to the respective regulators. So I'm just trying to set the scene that around the world, there is this consideration of adopting the IFRS standard. Ravi from ISSP listed certain jurisdictions where the specific approach, whether they are adopting this immediately or they are adopting in some years, like 3 years, 4 years, 2 years, or they are adopting in a phased manner. So all of those approaches are available. We at the Institute have published a document, a study, in which we have analyzed and summarized all such relevant jurisdictions where the international landscape, you can go and read that. But some of those have been specifically identified by Ravi in his presentation. So that is where the ISP or the IFRS standards adoption status worldwide is. When it comes to Pakistan, we are in discussion with the regulators. We have interacted with State Bank. We have interacted with SCCP publicly, as well as having separate discussions with them as well. So one thing is very clear based on all such discussion, deliberation, that we are going towards IFRS sustainability disclosure standards, right? The framework choice, or I would say the channel choice, is clear that it is going to be the IFRS standards. One thing is clear. Now it is about the timing when this will become mandated. When we have interacted with companies, the view of the company is that where it is directly relevant for their business, not coming through a regulatory requirement, but if it is relevant for their business, then they are immediately adopting it, immediately preparing the sustainability reports, and till the adoption or these standards have come, it was the GRI standard which they were following, and the report that have been published were using the GRI. But going forward, as the requirements around the world become more known, the framework become more known. In Pakistan, as I said, it is going to be IFRS, and they are kind of ready where there is a direct business impact. Then there is another category where you also asked about the question about what is net zero, and there's a group of companies where they have made a public commitment about being net zero at certain point of time future. So that is where also there is more willingness and more adaptation to their procedures, so that they can come out and do their reportings. Then there are other companies, which I would say very large companies. There also the appetite is high. But as you go into the smaller companies, the appetite of adoption of a proper framework has been low. So that is a challenge. So in terms of SCCP, we have also made this public as well, that it is going to be the phased approach. It is not going to be one big bang that it becomes mandatory or applicable to everyone. It is going to be a phased approach. In the phased approach, the idea is to have
very large entities, and there is a criteria, there's a threshold given that these are considered to be large, very large entities. So for those large entities is going to come first, then the large companies, and then it will stop at all the listed companies. And then after 3 years, one would see how this is going to be impacted for a larger other, the rest of the companies in Pakistan. So what I'm trying to say is at the moment, it is not made mandatory in Pakistan. The discussions are towards adopting them, the IFRS standards only, and those standards to be adopted in a phased manner. Institute has recommended that adoption from January 1, 2025. SSCP is receptive of this idea, but of course, they also have to gauge and understand like what is the response of the companies. So they are doing their work, their homework, maybe interacting with companies. But from our side, we have done the consultation, and for a very large entities, I think that is where probably there's more acceptance. So that is the way we've. Okay. So Farooq, does ICAP intend to issue any guidelines on reporting as per IFRS SDSs, any guidelines on their requirements? Right. So I think, first of all, we need to take note of what Ravi presented, and that is there's a knowledge hub where all sorts of guidances which either issued by ISSB or IFRS Foundation or other credible organizations that includes other chartered accountant institutes and some like sustainable stock exchange. So those are the forums which are regularly providing guidance material. So that is one. From the institute side, if you go to our website, ICAP website, there's a separate tab, sustainability reporting. And in that, you will see the publications that have been issued by the institute, all the seminars, all the consultations that have been done. So those videos are also available there. And we intend to issue a FAQ series for which the structure that we have is that we have a sustainability working group. And in that, we have launched this concept so that topic by topic, lots of questions are coming in this session, other sessions. Also, we will also think about the pertinent questions that may be relevant for everybody. So topic by topic, we will be issuing FAQ series. First of that will be coming that we have chalked out. Our strategy is on carbon reporting. So these S1, S2, S3, all sort of questions that we have up till now, we will be summarizing them, responding to them. So that will become a readily available use for all of you, for all the companies. And we'll continue to invite comments and questions as well, so that we'll be able to respond first based on the knowledge that we have within the institute through our working group, or if need be, we will be approaching the ISSB to have that. So there will be continuing or a regular flow of publications that will come from the institute. And I've given you a heads up that the first such publication that we are working on is the FAQ series. And within the FAQ series, it is going to be the carbon reporting, because that is the first standard that is going to hit the companies or impact the companies, or that will become mandatory for companies. Okay, so this is also, I think, part of capacity building and training, I guess. ICAP will be following this for capacity building training of companies and professionals through this forum that you mentioned. Yes, that's the FAQ, but as far as the capacity building is concerned, we have many discussions with you, Muniza, and like such seminars that we are having it today. We'll be having more such sessions. I was just having a discussion with Zafar Subhani Saab that carbon trading is another very relevant topic. Probably
our colleague from Sindh government will also talk about that. Again, a very, very interesting topic and relevant. So we'll be having more such sessions here in Karachi through SRC, but also in other parts of Pakistan, like we'll go to Lahore and Islamabad, inshallah, to do more such sessions and look towards Fawzia and others to participate and contribute in this capacity building initiative. And you mentioned that, the reporting will be applicable from 1st January 2025 onwards. So when do you see the assurance coming in on those reporting? So that is the expectation that it is going to be coming from in a phased manner on a very large entities in from January 1, 2025. Again, I want to clarify one point that this is the starting date. Then the first reporting will come in 2026 effectively. And for that also, you have 9 months to report in your first reporting. So there's a lot of time available in terms of understanding. So what we have recommended in terms of the assurance, I think it is universally accepted and valued that whatever reporting that is coming out of companies, unless and until there is some sort of an assurance on that, the credibility of that information is not there. So assurance is a very well accepted concept around the world that for any reporting that gives credibility to the whole process. So assurance is something that is accepted. Now, at the moment as I speak, there is no issued sustainability assurance standard. An exposure draft has been issued, and that exposure draft will become standard. That the expectation is that within 2024, that standard will be issued. So the recommendation that we have made to SSCP and have issued publicly as well is to make the assurance applicable or mandatory after 1 year of the sustainability reporting becomes mandatory under IFRS. So there will be a further 1 year gap so that the companies get adjusted with all the challenges, and they have much stronger controls and systems through which the numbers are coming out. So accordingly, the assurance provider should be in a situation where there should not be koi bade masle nahi ho, or qualifications to have avoided. So the recommendation has been that 1 year after this. Okay. So that was helpful, Bharat. Thank you so much. And we have somebody from the industry who's very relevant to all these discussions. Thank you, Mr. Imran Mirza, for joining us today. And if I can come to you now. So if you can shed some light on how does climate change impact oil and gas industry, particularly in terms of transition risks? And how do you think would GHG emission reporting help in this regard? Ji, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm not as eloquent as Farooq is, so do pardon me. You want one-liner or an elaborated answer? More than one line, please. चूंकि ये माहौल काफी गंभीर हो गया था इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद, तो मैंने सोचा कि जरा थोड़ा सा इसमें एक तड़का लगाया जाए. But having said this, I mean, मैं जब यहाँ आया and when I heard GHG, so I'm directly related with polluting the environment. So I'm the polluter. ठीक है जी. But when I say I'm the polluter, you people are the beneficiaries of this pollution, right? So एक question था मेरा, and that question will come to Fawzia, it will come to everyone in this hall. आप जिंदगी में prioritize करते हैं चीजों को. I was attending a conference in Calgary, oil and gas, and there was this all sorts of gurus sitting around talking about environment and greenhouse emissions and whatnot, hydrogen and all that. So there was a panel discussion of 5 African countries, oil and gas ministers sitting there. So my answer to what you have asked lies in this incident that I noted, I encountered, and I really learned from it. उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया. I think it was a Kenyan oil minister. So he said,
and I am not verbatim, but I will try to sort of convey exactly what the message was. He said, am I responsible for this pollution? The revolution, the industrial revolution has been happening for the last 250 years. It has come to Africa very recently. So my priority is different. My priority is to feed my people. ठीक है जी? So when it comes to my priority, you are coming to me and extracting oil, gas, A, B, C, minerals, whatnot from Africa. And now you are asking me to contribute to restricting the greenhouse emissions and all that, and produce and move on to renewables and all that. How am I going to feed my people? So this is the question for Pakistan also. When you say, what are the challenges? I just heard the financial, what was the term? I'm sorry, the age is catching up, so I probably will not be able to remember exactly, but financial emissions. Financed emissions. financed emissions. Finance emissions. So what you are telling me in so many words, that fossil fuel financing is out of the window. ठीक है जी? So coal, which is the indigenous thing as far as Pakistan is concerned, and Pakistan should utilize this coal to meet its energy requirements. देखिए हमको 2 साल पहले एक ICAP ने एक सेमिनार किया था, उसमें कुछ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, CFO as divergent, क्या था कुछ, sorry? Divergent. So उसका क्या मतलब था? So I have to create ripples. I don't want to be sort of a very mundane 2 + 2, जो चाहिए मैं बता दूंगा result. No. You have to have your feet on the ground. Pakistan need energy. These standards are not value addition. I mean, I'm very blunt. If ICAP wants to cancel my membership for that, I don't mind it. लेकिन ये हो नहीं सकता. देखिए, Pakistan, I understand. But you see, the problem with Pakistan is that we are like this. We are the borrowers. We have got the kashkol. So IFCs, the World Bank, the IMFs, and everyone. I've been begging around for my project of $1.5 billion for the last 10 years. I'm not successful. The UKEF, I don't want to name it, but let me say, one of the ECAs of the world, they say, we can't give you the financing for the machinery, but we can give you the financing for the technology. Now, what kind of a hypocrisy is this? You are selling me the technology to upgrade my refinery, but you're not giving me the finance to really install the equipment. I fail to understand. So all these standards, with all due respect to Fawzia and Nazish and everyone, I know, but you are a very good advocate of it. So what I'm saying, yes, this is a real life challenge for us, for the oil and gas sector, particularly for refineries. And since I belong to a refinery, there are colleagues of mine sitting here from refining sector. Zafar, where are you? Hello. So all I'm saying is, मैं तो सवाल भी भूल गया अपने उसमें, लेकिन जवाब आप लोगों को मिल गया होगा. You spoke You want to ask another question? Yes, I do. Because you spoke about the financial difficulties. I mean, the difficulty in obtaining finance. Actually, I asked about the climate change impact on oil and gas, industry, and how does the GHG reporting emissions help in this regard? Well, we have been, my colleagues from Sindh Environment, they're sitting here. We are the most compliant refinery in Pakistan when it comes to NEQs and SEQs. So SEPA ho, NEQs, so we are well compliant. Lekin, you see, when you raise the bar, of course, it adds, it means more capex, more OPEX, stuff like that. And again, you are restricting my financing. So
To me, it's a catch-22 situation. What do you want me to do? Khalid Sahab, what should I do? This is a real drama. For you to retire. So this is an issue, yes, and the challenge is that the global, especially the Western financiers, they are not ready to give finance for the fossil fuels. And as I said, I've been working on it for the last decade or so. And I've practically gone to all the leading ECAs of this world and financial institutions. And this is the challenge that they give to us. So my problem is that, yes, this issue is not going away. We have to be compliant in order to really meet and tick all the boxes, be compliant and give more business to the accounting firms to give the compliance reportings on this reporting that we'll be doing for the, so this will happen. Okay, yeah. So in this scenario, Imran Sahab, if you can shed some light about, how the industry can align their business strategy and operations with climate-related targets and commitments, and the challenges regarding the governance and compliance with government regulations and all. So in that scenario, how would you suggest? I'm taking up the time of my other colleagues, so do pardon me. Take him. Zafar is sitting here. So we have been engaged with the ministry in drafting a refining policy for the last 4 years. We got it amended and so on and so forth. The policy says, the prerequisite of the policy is that we have to produce Euro 5 compliant diesel and MS. And we also have to bring down the production of furnace oil. Now, this is the objective of the policy, and the refineries are supposed to sort of follow and implement these. You know what is the value of this? $5 billion. अब ये हमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस. सो मेरा अगेन आई एम गोइंग अराउंड इन सर्कल्स. The refineries are required to comply with these things, and we know for a fact that yes, sulfur content should be brought down because it is injurious to health. We know that emissions are bad, but what is the issue? The emissions are not coming from the fuel. The emissions are coming from the bad engine which is on the road. There is still 1965 की Leyland की buses running on Karachi roads. उन पे पीछे पेंट कर देते हैं मॉडल 2023. आप उसमें यूरो 5 फ्यूल डाल दें, उसकी emission तो उसी तरह की होगी. So the problem here is that it's not just one. You have to have a very, very comprehensive and a broad scale understanding of the issue, and then only you can address it. So one segment cannot alone comply and be able to sort of address this issue. Okay. So thank you, Mr. Imran. And coming to the other Mr. Imran on our panel today, he's a representative of the government, and it would be very valuable for him to share his views. So if I can ask you about the concept of nationally determined contributions, NDCs, and their status in Pakistan. Thank you very much. NDC is actually the very important part of the Paris Agreement, which it introduced in 2015 by United Nations Framework for Climate Change. पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स 2016 में किया था और 2021 में इसको फिर अपडेट भी किया. इसके अंदर जब पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स किया तो इसने अपनी इमिशंस भी कैलकुलेट की थी इसके अंदर, और सारे प्रॉमिस ने इसमें शेयर दिया था. और सिंध इसमें इसलिए लीडिंग था क्योंकि मेजर जो इमिशंस का जो लीड है वो सिंध के अंदर होती है, जो सिंध ने इसके अंदर लीड किया. जहाँ तक आपने इनिशिएटिव्स की बात की, एक्चुअली पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री इसके अंदर सामने उभर के आया जिसने 2 तरह के अपने प्रोजेक्ट किए, इनिशिएटिव्स किए. वन इज द नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट एंड अदर इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट. टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट जो इमरान साहब ने बताया
उसमें काफ़ी हिंडर्स थी और उसका मैं अभी आपको जिक्र भी करूँगा कि वो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई। जो नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट थे उसके अंदर हमारी काफ़ी सक्सेस रेट अच्छा है। नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट में जो नंबर 1 प्रोजेक्ट था, यू एवरीवन नो, लास्ट 3 to 5 इयर्स आपने ये बड़ा नाम सुना होगा, 10 मिलियन सुनामी ट्रीज प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो था वो इनिशिएट हुआ और वो काफ़ी हद तक काफ़ी एस्केलेटेड वे में आगे चला और चल रहा है कामयाबी से। And then the other one is the protected areas initiative project, जिसके अंदर हमारे यहाँ कीथर रेंज है और बाकी ऑलमोस्ट 7 और 8 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट थे, वो भी बिलियन ट्री प्रोग्राम के अंदर ये आए थे। These all are the nature based project. When we talk about टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट, पाकिस्तान ने उसमें भी कमिटमेंट की अपनी और उसके अंदर पाकिस्तान ने वॉलंटरी बेसिस के अंदर 50% रिडक्शन की कमिटमेंट की। उसके अंदर 15% विद इन ऑन रिसोर्सेज जो हमें 2030 तक अपने करनी है इसके अंदर, और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को खुद करनी है। जो 35% है उसके लिए हमें इंटरनेशनल डोनर्स ये ग्रांट्स चाहिए। अब ये जो 35% है एक्चुअली ये पाकिस्तान अगर इसको इन्वेस्टमेंट को काउंट किया जाए तो ये $100 बिलियन बनते हैं जो इन्वेस्टमेंट हमें दरकार है। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम अब आपको बात समझ में आएगी कि पाकिस्तान की जो टोटल इमिशंस हैं जो हमने रिपोर्टिंग है वो 490 मैट्रिक टन पर CO2 इमिशंस। मैडम ने बता दिया था कि CO2 में ये हमारा जो यूनिट है उसके अंदर 490। ये जो 2 प्रोजेक्ट जो मैंने आपको नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट बताई है, अराउंड जो हमारी जो 240 तक की जो हमारी जो कैटर करेगा, ये 500 मैट्रिक टन CO2 को कैटर कर सकता है, ये अगर ये कामयाबी से ये प्रोजेक्ट चले तो। प्रॉब्लम ये है कि अगर ग्लोबली हमारी जो इमिशंस को काउंट किया जाए तो ये हमारी इमिशंस 1% भी पूरी ग्लोबली नहीं बनती हैं, वो ये 0.90 बनती हैं हमारी जो इमिशंस हैं। बट एक जर्मन की एक रिपोर्ट है उनकी हम जो वर्नेबल कंट्रीज में हम नंबर 5 पे आते हैं रैंक। ईच ईयर हम देते हैं। आज सुबह भी एक मीटिंग थी, उसके अंदर ये था कि इस साल गिलगित बल्तिस्तान में स्टिल कोई बारिश नहीं हुई है, कोई बर्फबारी नहीं हुई है। मिड ऑफ जनवरी के अंदर हम आ गए हैं और कोई बर्फबारी नहीं हुई है, जिसको हम पाकिस्तान का वाटर टैंक कहते हैं। बर्फबारी होगी तो दरियाए सिंध में पानी आएगा। ड्राउट कंडीशंस हैं, फ्लड्स हैं, ये सारी ये सारे वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं जो 5वें नंबर पे है। आपने वेरी रिसेंटली 2 इयर्स के अंदर आपने देखा होगा कि चोलिस्तान के अंदर मार्च के अंदर पानी एवेपरेट हो गया, लाइव स्टॉक खत्म हो गया। आपने सिंध के अंदर लास्ट ईयर देखा, $30 बिलियन का आपको लॉस बताया जाता है। लास्ट ईयर विंटर के अंदर मरी के अंदर आपने देखा कि लोग पिकनिक मनाने गए और अचानक बर्फबारी हुई और उसके अंदर कैजुअलिटीज हुई। तो वी आर वेरी वल्नरेबल और इन वेरी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन इसके अंदर जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है, और जो हमारी कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये बड़ा ऑड सा लगता होगा जब हम अपने घरों में बैठते हैं कि पाकिस्तान शायद कोई या भीख मंगा है या क्या ऐसी बात है कि पाकिस्तान हर वक्त मांगता ही रहता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी की हुई नहीं है। थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा हो गया, बस 1 मिनट और लूंगा कि इसके अंदर मैं आपको बताऊं। इस वक्त जो दुनिया का जो एनर्जी का जो मिक्स है ना, उसमें कोल की प्रोडक्शन है 68%। ये 52% जो रॉन्ग फिगर जो प्रेजेंट की जाती है वो इसलिए की जाती है कि अगर आप मिडिल ईस्ट को हटा दें, जो कि ज़्यादातर ऑयल बेस है, अगर मिडिल ईस्ट को हटा दें तो फिर ये कहते हैं कि 52% बन गई है। और COP28 जो अभी यूएई के अंदर हुई थी, जो फेल हो गई और जिसके अंदर कोई लास्ट ईयर भी कोई इसके अंदर कोई खास कमिटमेंट नहीं आई, इस ईयर भी नहीं आई, जो डेवलप कंट्रीज थे उनकी प्रॉब्लम यही थी कि वो इसको अब भी से सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है। आप इनकी कंसिस्टेंसी देखें कि जो बुश से लेके और जो अब जो बाइडन तक, क्योटो प्रोटोकॉल पे 2005 से कोई सिग्नेटरी नहीं है, यूएसए जैसा कंट्री सिग्नेटरी नहीं है। तो ये इश्यूज थे और ये मैंने बताया है कि ये पाकिस्तान का जो मैंने आपको बताया, ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन है और जो हमारे जो स्टेप्स हैं।
Ji. Acha, Mr. Imran, I believe there is a Sindh climate change policy. So if you can shed some light about the strategies that the Sindh government has taken in relation to reduction of GHG emissions. सिंध 2016 में ये इनिशिएटिव लिया गया था, जो हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी सिंध की हमने जो डेवलप की थी 2016 के अंदर की थी। ब्यूटी ये थी कि हमने इसके अंदर अपने जितने भी लाइन डिपार्टमेंट थे 42 सबको इसमें शामिल किया। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी इसके में लेके कंसल्टेटिव मीटिंग की और उसके बाद एक पॉलिसी बनाई। जिस वक्त हम पॉलिसी बना रहे थे ये पॉलिसी 2020-21 के अंदर आ जाती। उस वक्त एक स्टडी और की गई जो एडीपी और वर्ल्ड बैंक ने की कॉर्पोरेशन हुई, वो कराची कंट्री का हमारा रिस्क असेसमेंट हुआ था। उसको भी हमने इस पॉलिसी के अंदर ऐड किया और एंड देन 2022 के अंदर ये हमारी पॉलिसी आई। क्योंकि वी आर ऑन द टेल, उस पॉलिसी के अंदर हमने एडॉप्शन और मिटिगेशन मेजर्स को बड़ा फोकस किया है, जिसके अंदर हमारे यहाँ जो फ्लड्स आते हैं और जो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, जो कराची के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको जो हमारे यहाँ जो कराची में एक सिस्टम है नाला सिस्टम जिसको कहते हैं हमारे यहाँ गुज्जर नाला, ये औरंगी नाला और दूसरे महमूदाबाद नाला, ये सारे अब उन क्लाइमेट चेंज की जो मेथोलॉजी है उसके ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर 3 आवर्स के अंदर मोर देन 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो और वो बारिश कंटिन्यूस 7 डेज तक रहे, तो इस बेसिस पे ये सारे हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उसी बेसिस पे हम डेवलप करा रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, आज सुबह ही एक मीटिंग थी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जो हमारी लैंडफिल साइड है उसके हम वो उन प्रोजेक्ट को हम पहले तो हम इसकी वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट पे ला रहे थे, लेकिन आज हैरतअंगेज तौर पे एक कंपनी आई जिसने हमें ये कहा कि मैं वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से ज़्यादा मैं वेस्ट गैसिफिकेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट उन्होंने वो प्रेजेंट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एसएसजीसी ने भी कुछ दिन पहले कहा है कि उनको गैस की ज़रूरत है, अगर कोई पार्टनर प्राइवेट पार्टनर उनको वो करे तो ये भी ये सारी हमारी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड। Acha. And there was some news in the media recently about Sindh government working on the development of carbon credit and offset scheme. If you can share some details in that regard, please. यस, गुड न्यूज़ यही है कि हमने तकरीबन लास्ट ईयर और इस ईयर अराउंड $40 मिलियन जो है सिंध गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिसीव हुए हैं फॉर कार्बन क्रेडिट। इसके अंदर एक छोटी सी एक ये है कि एक कार्बन क्रेडिट जो होता है ना, वो एक मेट्रिक टन CO2 इमिशंस को अगर रिडक्शन की जाए तो वो एक कार्बन क्रेडिट होता है। ओनली सिंध के अंदर जो हमारे जो कार्बन क्रेडिट हैं वो 3.1 मिलियन कार्बन क्रेडिट मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे हमें $40 मिलियन जो है वो इंटरनेशनली हमें रिसीव हुई है। ये हमारा वो प्रोजेक्ट था जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर हमारा डेवलप किया गया था, और इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को हमने इसके ऊपर एक दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने सुने होंगे, जो हमने एक दिन में वो ट्रीज लगाए थे उस बेसिस पे। एक और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि हमारा डेल्टा ब्लू कार्बन के नाम से, डेल्टा ब्लू कार्बन 2, जो डिस्ट्रिक्ट सजावल और बदीन के अंदर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट आने के बाद हमारी जो ये मार्केट है कार्बन क्रेडिट की, ये $140 मिलियन के ऊपर चली जाएगी ये मार्केट जो है। ये हमारा वो प्रोजेक्ट था। इसके ऊपर एक काफ़ी लंबी जंग चली थी। आपने सुना होगा कि हमारे पास 2 आइलैंड थे, बुंडाल और बंगाल आइलैंड, और एक ज़माने में सुना था कि वहाँ बड़ी कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसके ऊपर काफ़ी वो किया था। फिर ये क्यों हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, ये जो हैं शायद डेवलपमेंट के चाहते नहीं है डेवलपमेंट का। जिन कंट्रीज ने डेवलपमेंट की थी, आप उन कंट्रीज का हाल देख सकते हैं। जो सुनामी जो आपने देखा था थाईलैंड के अंदर आया, जो इंडोनेशिया में जो सुनामी आया था बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ मैंग्रोव, और उसका जो फ्रूट है वो अब आपको नजर आ रहा है कि यही मैंग्रोव जब डांस कर रहे हैं तो इसका एक ह्यूज अमाउंट है। एक जो नॉर्मल नीम का ट्री होता है उसके मुकाबले में एक मैंग्रोव का ट्री, उससे 60% ज्यादा कार्बन उसके अंदर सिंक होता है। वो कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसके अंदर उससे ज्यादा होती है। इस वक्त हमारा पोटेंशियल जो पूरे बलूचिस्तान और सिंध का मिला के जो हमारा पोटेंशियल है वो 1,29,000 हेक्टेयर का है, और इस वक्त ये अप टू द मार्क है हमारे पास। इसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश वो 2 वाइड कंट्रीज हैं जहाँ मैंग्रोव की डिक्रीज नहीं हुआ बल्कि वो इंक्रीज हो रहा है। That's good to know. And now coming to, yes, I think that does deserve applause for sure.
some good news coming in. Okay, Essen, coming to you last but not the least. And as Fauziya said, you're Mr. KPMG now. So that's your new title, I believe. So Essen, we spoke about, I think, scope 1 and scope 2, but scope 3 was, I think, not discussed in that much detail. So what are the challenges for companies in relation to scope 3 GHG emissions reporting, and how can those challenges be overcome? First of all, thank you, Farooq ka, ICAP का मुझे invite किया. Just before answering that question, देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, चाहे वो स्कोप 1 हो, स्कोप 2 हो, या इस पूरे टॉपिक पे GHG emissions के ऊपर, वो है अवेयरनेस का, वो है इसके पूरे थीम का, इसके कॉन्सेप्ट का. राइट नाउ वी थिंक के, और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमरान साहब हमारे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं, मगर देखिए कोई इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाह रहा, कोई कार्बन की इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही, कोई उसके इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज नहीं कर रहा. यहाँ बैलेंसिंग की बात हो रही है, विच मीन्स के एविएशन इंडस्ट्री आगे चल के बंद नहीं होने वाली, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है. तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कतर एयरवेज बंद हो जाएगी, PIA बंद हो जाएगी, या हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पुराने तरीके से जो है ट्रैवल करना शुरू कर देंगे. एविएशन इंडस्ट्री रहेगी. हाँ, एविएशन इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही होगी, वो कार्बन ऑफसेट्स ले रही होगी, जो बराबर में इमरान साहब के दूसरे इमरान साहब बैठे हुए हैं जो सेल कर रहे हैं पूरी दुनिया को, वो अपनी रिफाइनरीज को सेल करेंगे. The thing is कि हमें पूरे टॉपिक को समझना है, and that's the very core of it. The biggest challenge of this whole theme and the study is that at this stage awareness build हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो concepts हैं, key concepts हैं, everybody is focusing on compliance, and वहीं से problem आती है green washing की, false claims की, जो इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक इशू है. फरूख ने भी बात की कि क्रेडिबिलिटी जो है इस वक्त वो बड़ी क्वेश्चनेबल है, और उसके बहुत ऑब्वियस दो बड़े रीजन जो मुझे लगते हैं. एक है कि डेटा की अवेलेबिलिटी, डेटा अवेलेबल ही नहीं होता. वजह क्या है कि उसको सही से समझा ही नहीं गया, उसको सही से उसके कस्टोडियंस के पास गए ही नहीं. हमने थोड़ा सा अभी फौजिया के डिस्कशन जब देख रहे थे जो पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, शी आइडेंटिफाइड कि एवरीथिंग इज विद फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग विद के इलेक्ट्रिक, जहरा बैठी हुई हैं, 2013 में हमने रिपोर्ट कर दिया था, या वहां से एक रिपोर्टिंग का जर्नी स्टार्ट हो गया था बैक देन. आज से 10 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स कि कितना जल्दी रियलाइजेशन होती है, कितना जल्दी हम ये समझते हैं कि चीज़ क्या है, क्या हमें रिपोर्ट करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कौन सा डेटा कहाँ पे है. देयर इज ऑलवेज रूम अवेलेबल कि हम एस्टिमेशन पे जाएं, हम प्राइमरी डेटा पे जाएं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. जो पहली स्टडी है वो नहीं हो पा रही है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इस वक्त, चाहे वो स्कोप 1 की हो, स्कोप 2 की हो, बट लार्जली स्कोप 3 को परसीव इस तरह से किया जा रहा है इस वक्त, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल. नोबडी इज गोइंग टू अटेम्प्ट इट. छोटी से छोटी कंपनी भी इसे कर सकती है, बिकॉज दैट डेटा इज फॉर ऑल 15 कैटेगरीज दैट वी डिस्कस्ड. That lies with you, that lies with the finance department. So the biggest concern or the biggest challenge is the data and availability and the data quality. And then obviously the credibility, which एक obvious challenge बना हुआ है इस वक्त हमारी पूरी industry का. That's the thing. Okay, so with the availability of data as it is and the maturity of data, which you just mentioned, and then Farooq said that first from January 2025 the reporting would start and then the assurance would come in. So as an external assurance provider, what challenges do you see in checking the transparency and credibility of such disclosure with this kind of data available, with this maturity of data available? Again, Muniza, the challenge is very same, which means as an assurance provider, we are provided with data which is of not any quality. Again, वहीं पे जाते हैं कि what is the root cause of that. So the problem is with the overall understanding of the whole subject matter. That is not there. That is lacking. Somebody is thinking कि जो है ये चीज अगर हम दे दें और इसी को ही जो है बस रिपोर्ट कर दें, तो that is actually this whole thing. बट वही जो 5 प्रिंसिपल थे जहाँ पे हम कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं. तो ट्रांसपेरेंसी इस वक्त जो है वो अंडरमाइन हो जाती है. एज एन एश्योरेंस प्रोवाइडर एवरीबडी इज सेइंग दैट दिस इज द होलसम डेटा, जबकि वो 80% है, 70% है. नोबडी इज रिस्ट्रिक्टिंग यू. जहरा ने अभी बात की कि दीज स्टैंडर्ड्स आर वॉलंटरी.
आप इसके अंदर खुद ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आई एम रिपोर्टिंग 70% या ये कैटेगरीज हैं जिनका डेटा अवेलेबल है, वी कैन रिपोर्ट ऑन दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज, बट ये अभी हमारे पास नहीं है रिपोर्टेड। एज एन एश्योरेंस प्रोवाइडर आपको कभी भी कोई जो है रिव्यूअर या एश्योरेंस प्रोवाइडर इस पे कोई बात नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, दिस इज द क्लेम, ये असर्शन है, इसके अगेंस्ट जो है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। प्रॉब्लम वहां आ रही होती है जहां पे data is not complete and the claim is that everything is hunky dory. So this is the biggest challenge that we, as an assurance provider we are facing. So as long as it is disclosed with the current status, I think the external assurance providers would also have some comfort in that level. Okay, so coming to financed emissions, how would you ensure accuracy of data or information regarding GHG emissions provided by borrowers to lending institutions, for financed emissions? This is the most trickiest. Yeah. Why? Because scope 1, scope 2, फिर scope 3. Scope 3 में भी ये बेचारा जो है 15th कैटेगरी पे पड़ा हुआ है। तो ये तो वो है जहां तक आने तक जो है ना पढ़ते पढ़ते जो सभी थक जाते हैं। तो nobody is giving it a damn कि क्या है, किस तरह से हो रहा है। Again उसको the concept is not very clear to everybody. बैंक्स का अभी उन्होंने नाजिश ने जो है पॉइंट आउट किया है, मैंने भी सिमिलर एक सिचुएशन की कि हमारा तो कोई एमिशंस ही नहीं है, हम क्या एमिशंस करेंगे। स्कोप 1 और स्कोप 2 है, दोज आर वेरी मिनिमल, डोंट टॉक अबाउट स्कोप 3 राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज द अप्रोच इज कंप्लायंस बेस्ड, ठीक है। इट शुड बी मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, एक होलसम, ये मेरा बिजनेस है। दिस इज नॉट CSR, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वॉलंटरी, दिस इज योर बिजनेस नाउ। अब अगर आपने आगे चल के काम करना है, एंड जैसे काम हम कर रहे हैं, मेड भी मैं एक ऐसी बिजनेस मॉडल में हूँ जहाँ पे इस वक्त एमिशंस होंगे, तो मुझे इस वक्त जो चीज बतानी है वो ये बतानी है कि मेरी अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच है। तो इन्वेस्टमेंट्स को अगर मुझे अट्रैक्ट करना है तो पहले तो वो उसकी रिपोर्टिंग जो है वो दैट शुड बी वेरी फेयर, एंड द बिगेस्ट चैलेंज जो इस वक्त है वो ऑन लैंडिंग या कमर्शियल लैंडिंग जो कर रहे हैं वहाँ पे दिस इज नॉट वेरी क्लियर। वहां पे वो क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। एंड देन दी अगेन जो स्टैंडर्डाइजेशन है, व्हेन वी अटेम्प्ट एज एक बैंक के साथ हमने एक अटेम्प्ट करना शुरू करी, तो वहां पे क्या है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो आपका बोरोवर है वो जिस नेचर या जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे भी अगेन क्वालिटी के बहुत मानिफेज डिफरेंसेस हैं, गैप्स हैं, डेटा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो चीज आ रही है, the input that is going to be feed into the system for those balance scorecard, जिसकी बेसिस पे हम environment की social risk rating करेंगे, वो ही अगर सही ना हो तो फिर जो है वो obviously आप समझे कि एक fruitless exercise हो जाती है, effort हो जाती है। But that is the biggest challenge इस वक्त जो financed emissions के ऊपर आ रही है। So we are not reporting what we have to report. I know, but there is always a point to start on. So that brings us to the end of the panel discussion. And I think we've had covered very varied questions, from reporting to assurance to industry to regulations. And if there's any question in the audience, yeah. If you can kindly specify your name and your organization and the panelists that you would like to answer your question. It's to everyone. My name is Kashi Raza and I work in Dolens. So my question is, are these standards specific to the businesses? What about informal sectors and governments? And my second question is, like, we already have a very low financial inclusion in the Pakistan. So when this will be an additional requirement. So how about this agricultural reform and all these things which we are talking about, how this initiative is going to support this? And I have another question, but yeah, you can ask the other question also. So the third question is like, it will be an added cost for the businesses from the reporting perspective, and then the offsetting, then we have to buy the carbon credits. So in a country like Pakistan, where businesses are always struggling and then there's a no level playing field, we have failed to implement the labor laws or health and safety standards. So I think the businesses themselves, we want to adopt this. It's indirectly, de-incentivizing them to, go for it, because the competition, if not doing it, then we are out of the business. Okay. But would you like to take the first part of the question? If I have understood you properly, you're asking about, like, is this business specific or more general? So I will explain the technicality of the IFRS standards. So these are only two standards, S1 and S2. But within that,
it encompasses a complete framework. How? If you go to IFRS S1, it talks about source of guidance, right? So IFRS 1 is equivalent to IAS 1. That's what we generally understand करते हैं कि जी presentation वगैरह. तो जो requirement है कि you have to refer to that source of guidance for your relevant risk and opportunity, right? And in those source of guidance, there is one source which is mandated. You have to refer to that, right? And that is SASB standards, Sustainability Accounting Standard Board standard. This was already there since 2019 and so on. So within that framework, SASB framework, there are 77 industry classifications, right? So you have food, you have apparel, accessories, you have oil and gas, you have financial sector. So all these sectors or the businesses, यानी कोई ऐसा business हो नहीं सकता जो उन 77 में club ना हो रहा हो, right? So those 77 industry classification has given you specific risk and opportunity for that very business. Okay? So it is not general. I can go on further explain that, but conceptually, what I'm saying is these are two standards. Within the standard refers to SASB, and SASB has given you 77 industry classification, risk and opportunities, and that covers everything except for climate. For climate, IFRS S2 is a specific standard, and then IFRS S2 has given industry-based guidance. So for those similarly, almost 77 industry classification, you have specific risk and opportunities for those businesses for climate as well. Together, that's the complete framework. And your second part of question, if you can just repeat that again. As we said that, the financial inclusion is already very low in Pakistan. So we were talking about this financed emissions. So how are we gonna, elevate our informal sector because it is already struggling. So this will be another, requirement. If we, as you already said, that our formal sectors are having challenges in, getting the finance. Yes, would you like to answer that? अच्छा दोनों जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू कॉस्ट था कि these offsets और ये these are the additional और burdensome for these organization. तो I'll tell you, देखिए एक स्टोरी है. दो शू वेयर बनाने की कंपनीज थी. उन्होंने अपने सेल्स पर्सन्स को एक आइलैंड पे भेजा. उस आइलैंड पे पहला गया, उसने जाके देखा कि यार यहाँ पे 30,000 लोग रहते हैं और सारे के सारे जो है वो पाँव में जूते नहीं पहनते, नंगे पाँव हैं. आया अपनी कंपनी को कहने लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ तो 30,000 लोग रहते हैं, कोई भी शूज़ ही नहीं पहनता. दूसरी कंपनी ने अपना बंदा भेजा, सेल्स पर्सन गया, वहाँ पे जाके देखा. देखने के बाद अपनी कंपनी को कहा 30,000 नहीं भेजना, 40,000 भेजना. यहाँ पे किसी के पास भी पाँव में जूते नहीं है, मैं सब भेज दूंगा. तो पॉइंट इज कि आप उसको ना देखते कैसे हो. ठीक है, इट्स अ कॉस्ट फॉर समबडी बट फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम बहुत सारे, देखें आपके बराबर में भी एक मुल्क बैठा हुआ है, वो इसके अंदर मार्केट विन करता चला जा रहा है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? इट्स द थॉट प्रोसेस. हमारा जो बिजनेसमैन है उसे अगर कॉस्ट समझेगा तो कुछ नहीं होने वाला, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझेगा तो कार्बन ऑफसेट्स बनाएगा, पूरी दुनिया को सेल करेगा. एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास 2 चेक रिपब्लिक से दफा चीज आ चुकी है. पाकिस्तान के अंदर दे वांट टू हैव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, हमें जगह नहीं मिल पाई थी उस वक्त. ठीक है, लेकिन स्टिल इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इमरान साहब बैठे हुए हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. देखो एविएशन इंडस्ट्री है, उनको कार्बन ऑफसेट्स कहीं तो लेने, कहाँ लेंगे? मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज के अंदर, कि वहां पे करेंगे तो वो इम्पैक्ट शो कर सकेंगे. हर एक का अपना इम्पैक्ट प्लान है. एज अ बिजनेसमैन मैं अगर सबके इम्पैक्ट प्लान को पढ़ूं और मैं उस राइट अपॉर्चुनिटी, उस राइट डायरेक्शन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूं, आपको बैंक भी इन्वेस्ट करेगा, आपको जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर एवरीबडी विल बी देयर. तो हमारी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मसला नहीं है, हमारी डायरेक्शन का मसला है. हम अपनी एमिशंस को अगर छुपाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट भी रोकेंगे.
अगर हम उसकी राइट डायरेक्शन के अंदर करते हैं एंड देन देयर शुड बी अ मैकेनिक्स अवेलेबल, तो वहां पर आप जो है उसको बड़े तरीके से सेल कर सकते हैं। तो आपके कार्बन ऑफसेट्स आपके पास पड़े में एक पूरी केस स्टडी जो है इस वक्त दुनिया में सिंध की दी जा रही है। जब मैं बताता हूँ तो लोग जो है मान नहीं रहे होते, बट आज आपके सामने बैठे हुए भी हैं। तो थिंग इज कि देखिए हम मार्केटिंग में भी बुरे हैं, हम जो है चीज़ों को पॉजिटिव लेने में जो है ना वो इतने कोई ज़्यादा शायद मुझे जो लगता है कि वो इतने अच्छे नहीं है। हमारा बिजनेसमैन जो है वो थोड़ा सा पहले से जो है ना वो डरा हुआ चलता है। तो थिंग इज कि इट्स नॉट एन एडिशनल कॉस्ट, इट्स योर बिजनेस। अगेन अगेन आई विल से कि वो बिजनेस है। देखिए चीजें क्या रही हैं, हम कार्बन टू एमिशंस को डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे आईडी को भी डिस्कस कर रहे हैं। जो S1 है उसके एजेंडा में इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी है। क्या वो हमारे बिजनेस से अलग है? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस। ये एक बेसिक चीज है जो हमें करनी ही करनी है। ठीक है, इसी तरह क्या वेस्टेज के ऊपर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नहीं, एज ए नेशन हमें करना है। तो आज हम अपने बिजनेसमैन को इस चीज से कैसे छोड़ सकते हैं? एज ए मिलेनियल, एज ए जनरेशन Z, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो तो इस वक्त एक अलग ही डायरेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं। दिस इज योर कस्टमर। 60% हमारी जो इस वक्त कस्टमर है वो इस तरीके की है, आपसे चीज ही नहीं लेगी अगर आप उसको ये शोकेस नहीं करेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम है सारे। ठीक है, तो थिंग इज कि अगेन एंड अगेन मुनीजा वही है कि अवेयरनेस एंड जो 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 कॉन्सेप्ट्स है ना उनको हमें बहुत ज्यादा करना है मार्केट इसके अंदर। And I think this is what ICAP is doing by you. holding a series of seminars actually. नहीं दे रहा कि आपको इन्वेस्ट करना है ट्रांजिशनल रिस्क को कम करने के लिए, आपको ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट्स भी दे रहा है। आज अगर बैंक्स पेपर बिलिंग हटा के डिजिटल पे जा रहे हैं तो दे आर सेविंग मिलियंस एनुअली, राइट? आज अगर सोलर पे कन्वर्जन हो रही है सो देर इज अ ह्यूज कॉस्ट बेनिफिट इज वेल। सो इट्स नॉट दैट कि हमारे दिमाग में जो है कि अगर हम ओवरऑल अपनी मिटिगेशन चैलेंजेस को अगर हम देखेंगे so it has to be very very cost intensive. It will bring cost saving overall as well. So it is just how that lens is working in each and every decision which you're taking. And I think if businesses don't wear that lens, eventually those sectors and those organizations will disappear. Yeah, Zara, that's very true. Do we have any other questions from the audience? Okay. जी, प्रेजेंटेशन में जैसे अभी बताया गया था कि You can introduce yourself, please. my Your name name is and your Jawad and I organization. work for an audit firm, Hafiz & Co. जैसे कि प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि one country has implemented carbon border tax, I think. तो do you think कि हमारा जो पाकिस्तान कस्टम्स है और टैक्स रेगुलेटर है उसका कोई रोल हो सकता है इनकरेजिंग पूरी एक्सरसाइज के अंदर? ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात नाजिश ने हाईलाइट किया था, दिस इज विद रिगार्ड टू यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में है। और यूरोप में एक डायरेक्टिव आया है, उसको CSRD कहते हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव। और उसके अंडर जो है वो फिर ESRS जो है वो यूरोपियन, जैसे ये IFRS है ना, इस तरह से यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आए हैं, 12 के स्टैंडर्ड इशू हुए। सो CSRD के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है उन्होंने ये एक कार्बन बॉर्डर टैक्स का भी किया है। और उसमें उन्होंने इनिशियली जो है वो 4 इंडस्ट्रीज जो है वो पहले उन्होंने कहा है कि जी उसके ऊपर आई थिंक फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, आयरन है और एक शायद कोई और है। सो उसके ऊपर जो है वो पहले उन्होंने उसका लगाया है टैक्स। क्योंकि आप इसको कॉन्सेप्चुअली इस तरह से समझ लीजिए कि अगर एक की पूरी एक वहाँ की इंडस्ट्री है, हाँ, और वो सारा का सारा यूरोप में बना रहा है और एक सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान में बना रहा है, तो वहाँ जो उनकी अगर इमिशंस का अगर कोई इशू है या टारगेट से ज्यादा है तो उनके ऊपर उसका एक नेगेटिव या प्राइसिंग पे आ रहा होगा या कोई और उनको लेना पड़ रहा होगा। वो सारा का सारा पाकिस्तान शिफ्ट कर ले और यहाँ से एक्सपोर्ट करा ले, तो एक कॉन्सेप्चुअली तो बात समझ में आ जाती है ना कि वो क्या कर रहे हैं। सो ये चीज जो है वो इनिशियली इसके ऊपर है और फिर ये एक्सटेंड हो रही होगी बाकियों के ऊपर भी। सो मेरा ख्याल है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा पूरा का पूरा,
वो बड़ा सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्ट हो सकता है। और ऑलरेडी जो है वो आई थिंक जो लोग ज्यादा फील्ड के अंदर है दे कुड अंडरस्टैंड, दे कैन एक्सप्लेन कि जी वो रात दिन इसको हैंडल करने में लगे हुए हैं। सो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये रिवर्स नहीं है, ये पाकिस्तान से यानी जो माल जा रहा है, जो हम वर्ल्ड के अंदर जो एज ए सेलर है वहाँ ये इम्पैक्ट करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। तो हमारी जो एज यू से कि जी जो हमारी कस्टम एजेंसीज है वो है वहाँ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये अदर वे राउंड है। मैंने लॉजिक आपको बता दी और वो स्लोली किस तरह से ग्रेजुएट होगी ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। और पाकिस्तान जो है वो सिग्निफिकेंटली जहाँ उसका चैलेंज है वो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जहाँ आपका टेक्सटाइल वो होता है। मेरी किसी और से बात हो रही थी तो इंटरेस्टिंग कमेंट था कि अगर से फॉर एग्जांपल ये जो 4 मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं जो कि जल्दी या इनिशियली उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान से तो ये इतना जाता नहीं है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट ना एक्सपोर्ट इन सारी प्रोडक्ट्स की जो मैं बता रहा हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि कोई और कंट्री तो इफेक्ट होगा ना, तो अपॉर्चुनिटी खुलेगी। So business relevance तो वहाँ भी आ जाएगी. So this is something that we all need to get ourselves updated on this. Great. That brings us to the end of the panel discussion. I've just received an intimation from my team behind that, we are running out of time. So I would like to thank all my panelists over here for coming and, taking part in the discussion. Thank you so much. And yes, what a wonderful panel discussion, engagement from the audience. It was always there. Now, let me introduce our session chair, Mr. Farooq Rahman, to deliver a speech regarding the entire seminar that we've had so far. So please once again welcome Mr. Farooq Rahman. Thank you, Babar. Bismillahirrahmanirrahim. Formal Assalamu alaikum. I think बहुत सारी बातें हो गई हुई हैं, कोई लंबी तकरीर नहीं। I will be very, very brief here. मैं बहुत सारी कंसल्टेशंस में गया हूँ कंपनीज के साथ, प्रोफेशनल फर्म्स के साथ, एंड आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग टू देम उनकी प्रिपेयर्डनेस, उसको भी सुनता रहा हूँ। बहुत सारे सवालात के जवाब आज भी आपको मिले होंगे, कुछ कंसर्न्स जैसे इमरान ने भी कुछ हाईलाइट किए। एक ये पर्सपेक्टिव भी है, और कोई पर्सपेक्टिव जो है वो गलत नहीं होता। वी नीड टू हेयर ऑल द पर्सपेक्टिव्स एंड उसको एनालाइज करके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सो जितनी भी इसमें मेरी वो डिस्कशन रही और मैं एक्सप्लेन भी करता रहा, जो चीज़ की बात है और जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ आपको और वो समझने के लिए, बिकॉज वी आर इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ जो है वो हम स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स और दुनिया के साथ चलने की बात करते हैं। हम कोई अलग आइलैंड जो है वो नहीं बना सकते, तो हमें तो दुनिया के साथ चलना है। और दुनिया में जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड इज ऑफ IFRS स्टैंडर्ड्स, सो वी विल गो विद द IFRS स्टैंडर्ड। दैट इज अ प्रूवन एक फार्मूला रहा है। पूरी दुनिया ने जो है वो अकाउंटिंग के IFRS अडॉप्ट किए हैं और उसी के थ्रू उन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है। सस्टेनेबिलिटी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इज अ न्यू लैंग्वेज। मैं हर जगह ये बात कर रहा हूँ कि इट इज अ न्यू लैंग्वेज। फ्रांस में जाके आप अंग्रेजी बोलेंगे, वो नहीं समझेंगे, आपको फ्रेंच में फ्रेंच ही बात करनी पड़ेगी, तो सो दैट यू कैन गेट अक्रॉस। इट्स अ न्यू लैंग्वेज जो अगर आपने सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें सबको सीखनी है। सो वन थिंग इज क्लियर दैट वी विल अलाइन आवरसेल्व्स विद द IFRS जो कि ISP के फोरम से आ रहे होंगे। द सेकंड थिंग इज कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सब बिल्कुल क्लियर कर लें अपने जहन के अंदर कि मैं इसको फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस इक्वेट करूंगा कि आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या कोई स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी आप जाके जो है वो एयरलाइन का बिजनेस करें? क्या कोई ये कहता है कि जी इसकी टिकट की प्राइस ये होगी? क्या कोई स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि जी आपने कौन सी मशीनरी कितने में खरीदनी है? दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग। इट इज अ लैंग्वेज, द अकाउंटिंग जो IFRS है उसने कोडिफाई किया है कि जो ट्रांजैक्शंस ऑन ग्राउंड हैं वो एक अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, जिसका नाम हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, और उसके बैक पे एक जनरल लेजर या उसके पीछे वाउचिंग और पूरा सिस्टम होता है। वो कल्मिनेट होके आके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है जो आप और मैं बहुत आसानी से, या वो लोग जो कि इसके यूजर्स हैं
वो इसको आसानी से समझ लेते हैं कि जी ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स उसके अंदर आ रहे हैं, ये लायबिलिटीज आ रही है, ये हमारी इक्विटी है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये इसकी सेल्स है, ये एक्सपेंसेस है, ये हमारा नफा नुकसान इसके अंदर हो रहा है. सो the transactions are already on ground. Companies are already buying, selling. Companies are already incurring expenditure. They're already employing people. All of those are translated through a language, an accounting language, given by or standardized by the IFRS. And the end result is that we all understand what it means, what those transactions are, and what is the position of the company. The same, you need to understand that the transactions in relation to sustainability of an organization that is happening. अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और ये लाइट जल रही है तो कुछ हो रहा है, लाइट आ रही है. Now, how to measure that? How to report that कि मैं और आप उसको समझ सके, उसके यूजर्स, उसके स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड कर सके. So जो sustainability related चीज है, which is a language, a new language that we need to understand so that the transactions that are happening on ground, already on ground, अगर कोई ऑयल एंड गैस के अंदर है तो उसको ऑयल एंड गैस के इश्यूज होंगे, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज होंगे. अगर कोई टेक्सटाइल के अंदर है तो उसके टेक्सटाइल के रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज होंगे. एविएशन के अंदर है, फार्मा के अंदर है, उसके अपने स्पेसिफिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज होंगे. All this framework is requiring us कि उन ट्रांजैक्शंस को, उन चीजों को जो उस इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, उसको कन्वर्ट करके उसको इन अ रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की फॉर्म में आ जाए, so that we together can understand and use that information, which is now around the world is considered relevant information, not only for the very company, but also its investors. एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि मेरी एंटिटी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर क्या मीडियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हैं जो मेरे फाइनेंसिस को, मेरे एक्सेस टू फाइनेंस को, कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा. सो I again stress upon this fact that it is a new language which we all together have to learn and then apply. From a institute standpoint, we are continuously interacting with the regulators, and as of now, आपने आकर सईद साहब को भी सुना कि जो फर्स्ट फेज उनकी तरफ से है वो वॉलंटरी है. अभी वॉलंटरी गाइडलाइंस है, वॉलंटरी गाइडलाइंस को वो स्ट्रेंथन कर लेंगे, जिसमें वो IFRS का लिंक ले आएंगे. सो फॉर नाउ इट इज वॉलंटरी, राइट. गोइंग फॉरवर्ड जो रोड मैप नजर आ रहा है या जो थिंकिंग है वो टुवर्ड्स फॉर्मल एडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड्स है. वो फॉर्मल एडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड्स मैंने क्लैरिफाई किया है कि दैट इज समथिंग, वन अंडरस्टैंडिंग दैट आई कैन से पब्लिकली के SSCP के साथ ये है कि वो IFRS के स्टैंडर्ड्स होंगे. However, when those will become mandated, the recommendation that we have given is that it is going to be 3-phased, but will stop at all the listed companies जहां mandatory इसका context आ रहा है, right? First phase के अंदर very large entities, listed and unlisted. Second stage के अंदर large entities, listed and unlisted. But then the third phase is जो कि सिर्फ जो बकाया listed companies रह जाएंगी उसके ऊपर है. That has been the recommendation. Recommendation के अंदर further confirm किया है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी ये adopt होगा, first year में it is going to be climate. Within climate, scope 3 की exemption होगी. जो assurance है वो first year के अंदर recommendation है कि नहीं होगी, but going forward होगी. So that is a very broad structure, but as I speak, this is something not mandated by SCP up till now. Hopefully, I will not feel कि बहुत लंबा अरसा लगेगा. A decision will come on the mandatory part. Is that last चीज ये है कि जो capacity building है, please reach out to the institute.
कोई questions है अगर आपकी entity के अंदर already if you are in one or the other manner applying these standards or any other standard which has relevance to IFRS या sustainability reporting के अंदर, so we'll be happy to respond. और immediately अगर नहीं हो सकेगा तो हम उसको अपने as I said के FAQs के अंदर built in करेंगे so that we should continue to provide you guidance और capacity building के जो initiatives हैं वो continue रहेंगे. Please as I said के कोई और climate related specific topic है उसको हमें reach out करें, बताइए कि जी ये समझते हैं कि ये most relevant है. Already बहुत सारी बात हो रही है, मेरे कानों तक आ रहा है कि जो scenario analysis है वो एक टेक्निकल और मुश्किल टॉपिक है, शायद थोड़ा कॉस्टली भी है, बट अगेन वेरी वेरी रेलेवेंट टू कंपनीज उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए. इसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे. आज जो है आई जस्ट वांटेड टू फॉर्मली थैंक फौजिया यू for coming all the way from Saudi Arab to Lahore to Karachi. So thank you very much for you being here. You made a very impressive presentation. And same for Nazish Sheikha. She is part of our sustainability working group. She made an excellent presentation on the finance division, which is a technical and difficult topic, but we wanted that इसके बारे में इस discussion को इस subject को awareness जो है वो उसकी create होनी शुरू हो जाए. So that is an effort कि आपको ये जो GHG का जो first topic है इसके बारे में awareness हो जाए. I think all the panelists again, Ahsan, Zehra, Imran साहब बहुत शुक्रिया. My very special thanks to Sindh government. हमने लिखा था, आपने उसको accept किया और आके और बहुत ही valuable लोगों से matter share किया है, क्योंकि यहाँ जनरली लोगों की जो understanding है वो अभी weak है, but आपने carbon credits के हवाले से जो बात की है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छे से resonate की है. और कहीं ना कहीं कोई एंटरप्रेन्योर बैठा होगा जो इसके बारे में इसको आगे लेके चलेगा. हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आइंदा भी हम आपको तकलीफ देंगे, कांटेक्ट करेंगे. प्लीज हेल्प अस आउट इन क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस. अगर कहीं इंस्टीट्यूट की अगर ज़रूरत है किसी भी हवाले से, सो इन पब्लिक इंटरेस्ट वी रिमेन अवेलेबल. वी हैव सम एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स जो इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं. आज आपने चंद लोगों को देखा है और बहुत सारा हमारे स्टोर में है. So you will soon see more people coming forward and creating that awareness. Thank you. Thank you very much, Mr. Farooq Rahman. And now we have successfully made it to the end of this incredible session that we had today, full of knowledge, learning, and interaction. And now, of course, all the speakers that joined us here today, we have a little something for all of them. And to present those mementos to the speakers, I would first like to call Council Member Mr. Khalid Rahman on stage, and joined by him, Honorary Secretary of the Southern Region Committee, Syed Junaid Ali on stage. Let's have a round of applause for Syed Junaid Ali and Mr. Khalid Rahman. And first and foremost, allow me in welcoming Ms. Fawzia Safdar Khan. Would you please, ma'am, come up here, receive your memento. I'm sure we're all hungry, but I guess this just deserves a bigger round of applause. I'll join you. Thank you, ma'am. And now next, Ms. Nazish Sheikha, if you can come up on stage and collect your memento. I think she's left. All right. And then next, Syed Ehsan Ali Shah, would you please come up here and receive your memento? And now next, Mr. Imran Mirza, can you please come up on stage and collect your memento? And now next, Mr. Imran Saber, if you can come up here and collect your memento. And now next, Ms. Zehra Anik, if you can come up here and collect your.
I do believe another applause in the sequence is helpful. And what would a panel be without its moderator? So now, please, next, Ms. Muniza Osmanvat, if you can come up on stage for a very well-managed session. And now, last but not least, the session chair, Mr. Farooq Rahman, if you can come up here on stage. Thank you all for joining us here today. Ladies and gentlemen, that is okay. This time I did not have to say. Thank you, Mr. Khalid, Sayyid Junaid Ali. You have been a wonderful audience, might I add, and now we've reached the end of tonight's session.